The link of the Facebook. I think we are Um, live. no problem. I don't think any person is there. Ah, Is there give me a anyone second. Sharing. to send me the link so that I can see how does the workshop look from Facebook's screen? Done. Check your WhatsApp. Thank you. Received. And do you know how we know? Okay, there's No only problem. I don't think any person is there. ah, Is there anyone? okay. No people. Three people. Three viewers. I think we should wait. Let's Now just we wait are. for 5 more minutes. I guess we'll wait till 7:10 Hmm. and then we'll start. Just Okay, let me perfect. know when 7:10 because I am in full screen or full screen Sure, में sure, sure. दिख रहा नहीं है time I'll let और you I know. can actually use it. ठीक है बस I have it. Ooh. 'Is it just the three of us? Because do we count as how we count as viewers because I've joined it from my Facebook though. Yeah, there's no one. Is there a way we can see who is viewing us? Nope, I don't think so. There's a way. Okay. I'll thumb. I'll give a thumbs up myself to myself. All. 5 people. Yep. Let's just wait for like 6 more minutes, then we'll start. For sure. Why do I have a feeling people will join in late? That would be that they'll miss out on a lot of things, and we Hmm. have to be on schedule. Think yeah, like And is this being recorded? Like, will people be able to हाँ watch this? रिकॉर्ड हो रहा है यप यप Uh, so I don't think फेसबुक it's लाइव तो like फिर तो रिकॉर्ड हो रहा है तो like बाद में यूजर चेक कर सकते हैं safe. 4 minutes on till we start. ओके 'Well, captions are funny. It says 4 minutes until a new start.
Six viewers and five. I don't understand how we're going to start if we don't have at least 10 people. Rana, just by the way, if I remove this Figma screen, can you see can you see Google Chrome open now? Nope. Still seem Uh, to be right now. then how will I give them the example, right? So I have to stop sharing, then I'll share again. Yeah, I Okay. think so. Wait, if I can just change it directly from here. Okay, wait. I'll share the entire screen. Hmm. We have 15 people watching. How I think many? we should start 15. 15. Okay, cool. Yeah. It 15. popped up. Sure. Okay, just give me a minute. I have to cast my screen, right? So I think Isha, you'll have to do that. Bring me to stage one other thing. She's there. Okay. Set. I guess she's Perfect. something in the background. Okay, we're starting. You guys can see me presenting. Yep. Okay, cool. Hello and hi, everybody. I am here today to present to you alongside my friend and a dear colleague, Hassan Ahmed Rana. We're here on behalf of Pakistan Women in Computing, and in these 2 days, we have a boot camp on UX and UI. So we'll start off with our brief introductions. So Rana, please. Hello everyone. My name is Hassan Rana, and I'm currently working as a product designer at Bazaar Technologies. So yeah, that's me, and I have an experience for about 3 years. I have worked on multiple projects. I've designed multiple applications right now, with ranging from website and application. So that's a little introduction about me. Over to you, Sherry. Okay. I am Muhammad Shahryar Maiman, commonly called known as Sherry Sherry. uh, because people find it hard to pronounce or write my spelling. So Sherry, product designer at Bazaar Technologies. In my day-to-day job, I look at product conceptualization, user research, user testing, and of course UI. UX is almost everything that we do. Moving forward to the things we'll be covering in these 2 days. So in these 2 days, we will cover in the first day, we'll have an overview of UI and UX. We'll move on to the design process. Now, why we'll move on to the design process? It's because we want you to have an understanding of how design works, right? So a lot of us, we start off, as designers or as non-designers, we don't know where to start from. So that's why a design process, deep dive into it will help you understand that. Along with all of these things, we'll have some common tools that we'll be bringing in our slides to tell you what is used when. And tomorrow we'll have Figma, which is a design tool. Exploration will tell you how it's structured, what we can do with it. We'll play around and we'll do something hands-on. As outcomes of this workshop or bootcamp will be that you'll have a good understanding of UX and UI. You'll know how design works, and in the end of the day, you'll be able to do something on Figma. So that's about it on contents and outcomes. We'll start off with the overview of UX and UI. But before we do, I want to know if you guys know what UX or UI is. Uh, as long as I know, you guys cannot talk, but you can comment. So please comment if you know what UX is. Comment if you know what UI is. Hmm. Okay. Farzana Zahur, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum Assalam, Farzana. Okay. Hi, Shadia. Shazia, Majid, or Farzana, and among 17 people, do you guys know what UX is? अब जो भी पता आप मुझे बता सकते हैं, नॉट नेसेसरी आप लोग सही बताएं.
जितना भी UX के बारे में पता है, please share that with us. And if you find this difficult, you can always just हाँ. jump to telling what UI is. हाँ. And I could just share the next slide. So I'll wait for you guys for like 30 seconds, and then we'll move on to me telling you guys what UX and UI is. I guess I'll move on. So Sure. let's keep it simple. I'll tell you what user interface design is. So UI design is something that revolves around look and feel of a digital product. So when you have products or objects, how they look, how they're designed in terms of visually, how they're laid out, what's what, constitutes kahariya, that's UI design. So how content is structured on a page, on a screen, that's what UI design is. And how people interact with the user interface, that is your screen or your page, that is user interface design. I'll give you a very short example to keep it easy for you guys to understand. Just give me a minute. We have Google Chrome over here. So if I type in Google, so this is Google Chrome page, and as you can see, how the content is structured. That is this part. How everything is briefly aligned with everything else, right? That is a part of UI. This is how things are laid out on a page. The structure, the content, this is UI. And when we talk about UI, we also talk about typography. So typography in simpler terms would be how your type is placed on a screen. So type, वैसे तो we call fonts. जब भी हम कहते हैं कि यार मुझे for suppose Comic Sans is a very well-known font and everyone makes fun of it. So Comic Sans, for example, is a font, but in design we call it a type. Okay, so type and how type, each of the type is structured. For example, this Google is bigger than this text, so that's typography. So when a UI designer looks and deals with typography, colors. For example, this color is different than all other colors to make it look actionable. Icons is something that UI designers do. If that's okay with you guys, and if you guys understood, please give me a thumbs up. If you didn't, we can still have any questions that you guys have. I see some answers coming in late, but okay. Acha. One more thing, Shari, I think we should wait because notice that there's a certain delay in the Facebook live stream. UX डिज़ाइन किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट का डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है शायद, बिल्कुल. बेसिकली UX डिज़ाइन इज समथिंग लाइक कि किस तरीके से आपको फील आए, क्या एक एक्सपीरियंस करा. UI तो आपको देखा जैसे हम शेरी ने दिखाया था, इसमें किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं. दिस इज समथिंग लाइक UX यूज अबाउट दिस. Okay, Manisha Gautam says UI is user interface and UX is user experience. Okay, UI talks about what users do, whereas UX talks about how users feel. Okay, very close. Moving on to user experience. So user experience is a process combining or comprising of brainstorming, research, and testing. Now these three heavy terms we'll cover. Don't worry about that. So, and a lot of things do come inside of these three: brainstorming, research, and testing. So when we talk about user experience, it's like a process that we follow to help understand how a product can be made easy for our users to use. As a lot of you have pointed out, user experience is the experience or how people feel. So you guys are pretty much right. Exactly, that is what we do. We follow a process to understand how a product can be made easy for our users so that when they go or when they leave our app or our website, they have a good feeling about it. They want to come back to it and they are not frustrated by using that product. So to talk a little bit more about UX design, I would say that in UX design, we follow a certain process to understand user needs, why a user needs something, and how as a designer we can help cater those needs of the user. So first, suppose we can take smartphones as an example. And if you come to think of it, so we all have a lot of phones, right? We all carry a smartphone. Some of us have iPhone, some of us have an Android phone. So when we talk about user experience, have you ever noticed that
when I say, sorry, I'll get back to the user needs point. So when I talk about user needs, I mean, first suppose you have Samsung, and Samsung has A series, right? So you have A51, you have A71, and all of those phones, they have a night mode. In the camera, they have a night mode. Now, why do they have that night mode? That night mode is there because people increasingly all around the world have now a need of capturing photos from their phone in darker areas in nighttime. So that's why catering to those needs, Samsung and all of these big brands have come up with night mode in their Mhm. camera. See, I hope that's understandable. I'll move on to some comments that we have here to see if you guys are understanding what we're saying. Okay, Asana Bukhari, you've asked what is the difference between UI and UX when both are related to user interface design. Okay, one thing is that you can say that user experience is like at the top and it comprises of UI design. So, So UI is a part of UX, basically. yes, What Shay is trying to that's say. exactly. Rana, you wanna say something? नहीं just what I'm trying to say is कि सना तो basically UI is a part of a UX. ठीक है तो UI तो basically आपकी look and feel होगा जैसे कि अभी यहाँ पे Figma का डिजाइन देख रहे हैं अगर जहाँ पे ओवरव्यू लिखा है तो UI जब दिखाई दे रहा है राइट आपको UX is कि आप उसको किस तरह से आपका एक्सपीरियंस आप किस तरह से यूज करेंगे तो व्हाट आई ट्राइंग टू एक्सपेक्ट क्या गोल्स अकॉम्प्लिश होते हैं तो वो बेसिकली यूएक्स होता है तो जब और फर्दर हम आगे जाएंगे इस पर हमारे और चीज़ें कवर कर रहे होंगे तो फिर और आपको अच्छी अलग अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज यूआई एंड व्हाट इज यूएक्स व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस आर ओके शेरी Okay. If we move on to what do UI and UX encompass, so we can also see from here how UI is different than UX. So, uh, Sana, when we talk about UI, we talk about how visually a product looks like. Okay, so typography, as we mentioned, layout, colors, all the visuals, that is illustrations, icons, everything related to these things, that is visual design, comes into UI. And UX is a process that comes before UI. So how they both are like, it's like a coin. एक कॉइन का एक साइड होता है जहाँ पे आपका मज़ार बना हुआ होता है आई गेस और एक साइड पे चांद बना हुआ होता है सो यू कैन टेक यूएक्स एंड यूआई बाय दैट एग्जांपल यू कैन मेक इट एज यू कैन सी इट एज अ कॉइन कि एक तरफ यूआई एक तरफ यूएक्स है सो विद यूएक्स it's like you before you start anything, before you start the visual part of how a product will look, you do research, you try to understand why a product needs to look a certain way, what it's why it's needed to look that way so that people can do something on that product. I hope that makes sense. So UX comprises of research, user personas, site mapping, prototyping, and testing. Research testing will cover in the slides ahead. User personas, site mapping, prototyping to cover karenge. I'll tell you a little bit about user personas and site mapping. So when we talk about UI, right, we're saying हमारी एक ऐप बनी हुई है and it looks a certain way. लेकिन आपने कुछ ऐप्स देखी होंगी फॉर सपोज बाइकिया आ गई सो वेन एवर यू डाउनलोड बाइकिया द फर्स्ट व्यू दैट यू सी और एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर आई सॉ द फर्स्ट व्यू एज I saw the first view in Urdu. So why do they have a Urdu version of it जब आप पहले पहले उसे डाउनलोड करते हो ठीक है हालांकि यू कैन चेंज द लैंग्वेज मगर शुरुआत में वो उर्दू में क्यों आ रही है ठीक है so the part where the content is structured or the content is laid out in Urdu is UI, but why exactly have they used Urdu is because of UX, because their target audience is people who will majorly understand Urdu because we're in a country, Pakistan, our national language is Urdu. A lot of us are more comfortable with Urdu. So that is part of UX where you research, you try to understand your users and why or what they need. उस हिसाब से you have that thing in your UI. Another example would be other than digital products. हमारे पास पुराने ज़माने में शीशे की बॉटल में आती थी केचप केचप की हाँ और उसको केचप को सॉस वगैरह सब पे यही था जी
और उस ज़माने में हम लोग जब कैचअप निकालते थे, आई रिमेंबर बिकॉज व्हेन आई वाज स्मॉल देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास शीशे वाली बोतल होती थी, जब हम रेस्टोरेंट्स पर जाते थे। सो वहाँ पे यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर शीशे की बोतल बॉटल होती है तो कोई भी सॉस विच इज़ लाइक नॉट एग्जैक्टली सॉस, केचप वुड बी मे बी अ राइट थिंग, क्योंकि केचप जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। सो द थिकर समथिंग इज द थिकर अ लिक्विड इज, इट्स हार्डर टू गेट इट आउट ऑफ अ शीशे की बॉटल. So right now, the UI part is how the शीशे की bottle looks like, and the UX is how the person is using it. अब since ketchup की bottle का main जो काम है, जो यूजर की नीड है इसमें, वो ये है कि वो उस बॉटल में से कैचअप निकाले. ठीक है, तो दैट्स वाई द पिक्चर ऑन द राइट और मे बी दैट्स ऑन योर लेफ्ट, जिसमें बॉटल की जगह पे वी हैव अ स्क्विशी बॉटल और अ पैकेज, जिससे यू कैन इजीली जस्ट स्क्विश इट और आपकी कैचअप बाहर आती है. सो दैट इज हाउ यू एक्स impacts UI. We'll move on to the design. Ji, शायद एक स्लाइड पीछे जाओगे और एक और चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा, where do I have to go? वो कैचअप वाली स्लाइड जो थी। Okay, sure. अच्छा देखिए, ऑल्दो जो कैचअप वाली बोतल है, जो स्क्वीजी बोतल शरी ने बोली, काफ़ी जब स्क्वीज करते हैं, सेकंड में जो ग्लास वाली बोतल है, उन दोनों का ऑल्दो यूआई बहुत अच्छा है, लाइक देखने में वो भी अच्छी है, शीशे वाली बोतल और जो प्लास्टिक वाली बोतल है वो भी अच्छी है, बट एक्सपीरियंस जो है उन दोनों का बिल्कुल अलग है। राइट, एक शीशे वाली बोतल में आपको पता है, आपको मालूम होता है कि मुझे कितना थोड़ा सा केचप चाहिए, ज़्यादा आपने हल्का सा उसको प्रेस करा, आपके पास केचप आ जाएगा, ठीक है, आपकी मदार में। थिंग इज, जो कांच वाली बोतल होती है उसमें एक इशू ये होता है, जैसे शहरी ने एक और बात करी कि जितने थिकर द लिक्विड उतना मुश्किल होगा उसको देर से निकलना, तो आप यूजुअली पीछे इसको मार रहे होते हो कि यार जल्दी निकलो, यूजुअली हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं कि हम लोग कहते हैं खाना ठंडा ना हो जाए, हम बस ज़बरदस्ती उसको कर रहे होते हैं कि यार निकलो। उससे होता क्या है, इन रिजल्ट हमारा जो केचप होता है तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, सब आसपास छींटे वीटे गिर जाती हैं, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। लाइक ऑल्दो यूआई अच्छा है उसका, बट द एक्सपीरियंस जो वो प्रोवाइड करता है वो सही नहीं है। राइट, तो वो चीज़ यहाँ पे मैसेज एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वे करना चाह रही है। Okay. Before we move on, I would still have some space for you guys to ask questions. You guys want us to repeat something, or is there anything that you still find confusing? I don't see any new comments, but we'll wait for a second because I guess the stream is a little slow. So we'll move forward. I'll stop again in the middle before I give the stage to you, Hassan, to see if we have any new questions. So now that we've covered what UX is, what UI is, let's dive into the design process. Now, in the design process, there'll be a lot of things that I have already mentioned. I've just mentioned the names like research, testing, prototyping, design. A lot of that will now be explained to you in the further slides. So a design process can help you bypass the part where you don't know exactly where to start or what to do. And usually a lot of designers find their own processes, but the commonalities in all of these is usually a discovery session or you trying to understand objectives of why you want to design something. That follows it. User research follows this, where you try to validate your assumptions. Then comes the part where you do UI, right? You implement it. You now understand what the user needs. You know how to cater to those needs, so you design. That's where UI comes in. After that, you have testing, where you see if that design actually works. And then finally, you hand it off to the dev job, which is developer, and then it's on the Play Store. So, Rana, please take the stage. श्योर। तो डिज़ाइन का सबसे पहला प्रोसेस बोलूँगा तो होता है ऑब्जेक्टिव पे, क्या बना रहे हैं, राइट, क्या क्यों कर रहे हैं, लाइक वाई, लाइक मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तो वाई, मैं क्यों उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, मैं क्यों अपने रिसोर्सेज इस पर इन्वेस्ट करूँ ताकि बनाऊँ। तो ये चीज़ लाइक सबसे लाइक रिसर्च डिज़ाइन सब बात के फेज होते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। शरी, कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sorry, I
ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप कभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हो या कंपनी का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट करें, तो 3 क्वेश्चन जो आप हमेशा पूछने चाहिए: व्हाट्स वर्थ डूइंग, व्हाट आर वी क्रिएटिंग, एंड व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड। दोबारा आसान लफ्जों में बोलूँ तो क्या हमें अभी करना चाहिए, राइट? क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम अभी इस पे टाइम लगाएं, हम क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। लाइक मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, लेट्स सपोज जैसे अभी हम वी टॉकिंग अबाउट बाइक यार, राइट, तो मुझे अगर प्रोजेक्ट आता है कि मुझे बाइक या की तरह और एप्लीकेशन बनानी है, तो पहला सवाल मेरा होना चाहिए वाई, क्यों बनानी बाइक या तरह है। क्या वो एप्लीकेशन काम नहीं कर रही? अगर कर रही है तो क्या इश्यूज हैं? ठीक है, थिंग इज वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप आगे फॉरवर्ड, आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। जब आपने ये पूछ लिया कि ठीक है मैं क्या बना रहा हूँ, और द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड। इससे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपके एंड यूजर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा, या उनका कोई जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसान हो रही है या या कुछ और हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको 3 सवाल करने चाहिए, और मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। ओके, तो मूविंग ऑन टू व्हाट्स वर्थ डूइंग। ठीक है, इसका एक बेसिकली कह रहे हैं कि ग्राफ टाइप बना होता है, जिसको हम लोग फिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम लोग बीच में हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, हम सोचते हैं कि यार इसमें ये फीचर भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बॉटम नेविगेशन होगी वो इस तरह खुलेगी एंड ऑल द वगैरह वगैरह। थिंग इज कि हमें पहले सब कुछ को एक तरह से मार्क करना पड़ता है। तो अगर आप ये ग्राफ देखें तो नेक्स्ट एक्सिस वी आर फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि दैट वी कैन एक्चुअली बिल्ड एंड मेंटेन इट विद इन अ सर्टेन टाइम, बजट, रिसोर्सेज जो हमारे पास अभी मैन पावर है, कितना हमारे पास टाइम है, उसके हवाले से। और इम्पोर्टेंस जो है उसके क्या फीचर्स हमें चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर हम बाइकिया की बात करते हैं, बाइकिया के पास अगर एक बाइक, लेट्स सपोज इन फ्यूचर बाइकिया सपोज करती है कि मुझे करवाना है फूड डिलीवरी का सेटअप, ऑपरेशंस करवाना है, लेट्स लाइक फूड पांडा जो अपने करवाना है। ऑल द फिजिबिलिटी है, हमारे पास टाइम है, बजट है, मैन पावर है, बट दिस इम्पोर्टेंस उसकी वाकई है। अगर उसकी इम्पोर्टेंस कम है या उसकी फिजिबिलिटी भी कम है, तो वो अगर लाइक करिए, इग्नोर दिस वाले पार्ट में, हटा दें, रिमूव कर दें, अभी के लिए रिमूव कर दें। मे बी इन फ्यूचर उसके लिए जगह हो, मे बी इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, आप उसको उस वक्त कवर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इज कि लेट्स सपोज अगर मैं एक बाइक या बना रहा हूं, तो मेरा मेन टारगेट क्या है, मुझे एक बाइक सर्विस प्रोवाइड करने के, राइड हेलिंग एप्लीकेशन, लाइक मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लाइक मेरा सबसे मेन टारगेट होगा मैप होना चाहिए और उसमें गाड़ी होनी चाहिए, तो उसकी फिजिबिलिटी भी प्रॉपर है, राइट, मेरे पास उसकी लाइक बजट भी है, जब मेरा मेन टारगेट ही वही, राइट, और उसकी इंपॉर्टेंस तो सुपर्ब है, तो वो टॉप पे लाइक करती इंक्लूड और या तो डालो या मर जाओ। ये चीज़ की लाइक ये प्रॉपर कहानी होती है, या तो करो या तो करना है, आप कुछ भी आपको करना है। सेकंड चीज़, जैसे अगर हम एक और बाइक में लेके जाते हैं, तो एक और आता है डिलीवरी। सही है, हम लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस है, यप, मे बी हमारे पास, तो वो अगर स्ट्रांगली कंसिडर इस पार्ट में भी लाइक कर सकता है। हाँ ठीक है, हम इसको अभी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो होना चाहिए इंक्लूड और डाई वाले पार्ट में। हाँ, हमारी सारी जो रिसोर्सेज, जो हमारी सारी थिंकिंग का प्रोसेस जो होगा वो उस पर होगा। तो ये हमें सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के क्या कर रहे हैं। शरीफ, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, Rana, before we move on, Larib Alam has mentioned that this process is called design thinking. And yes, Larib, you're right. It's all the same. ऐसा ही है. When we talk about design thinking, we have, I guess, 4 to 5 main elements. That is, first, you empathize with the user. So yes, exactly. That is what we do in the research part, where we go to the users, try to understand their needs, we empathize, and then we try to solve. We try to define what their problem is. So that's the second part. The first part is empathize, then it's define, and then you go to ideate how you can solve that problem and do or take specific steps to solve that problem. Then you, in the ideate phase, also design and move on to having a prototype. That is you designing and having a functional model in your hand, and then you test that part. You test that prototype, and then you come back to empathize. So it's an iterative process, and everything's pretty much the same in design. uh, it's just that if you want to label it as design thinking or not, but at the core, at the basis, it's always design thinking. So Larry Balam, uh, I would say you've done a great job. Thank you for that. Let's move on to the second slide, Rana. Okay,
तो why are we doing this, right? ठीक है, थिंग इज यू मस्ट आंसर द व्हाई। फर्स्ट थिंग, आप कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा हो, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोजेक्ट क्यों करना है? ठीक है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अभी करने की ज़रूरत है, नहीं करनी, वही चीज़ फीचर्स अभी चाहिए, नहीं चाहिए, अगर आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा, रिमेंबर, आप या तो प्रोडक्ट जो अभी आप बना रहे हैं वो या तो फेल हो जाएगी, या उस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी जो आपका इनिशियली थॉट था। जितनी जल्दी, अगर आप जितनी आप मीटिंग करके जितनी वाई का प्रोसेस, जो 3-4 सवाल मैंने पूछे थे, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, लाइक व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे आपके, तो आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अगर आपको वाई क्लियर नहीं होगा, आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। वाई क्लियर नहीं है, आपको रिसर्च नहीं कर सकते। वाई इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। शरी, नेक्स्ट स्लाइड। यूजर नीड्स, ठीक है। सेकंड फर्स्ट थिंग है, मुझे मालूम हो गया मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्टेक होल्डर के साथ मेरी मीटिंग हुई कि वेबसाइट बनानी है, क्या चाहिए उसके लिए, ठीक है, लाइक प्रोजेक्ट है तो यूजर की नीड्स के, यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी यूजर हो वो आपकी वेबसाइट में क्यों आएगा? लाइक देयर इज बाइकिया, देयर इज करीम, देयर इज उबर, तो यूजर बाइकिया में क्यों आता है? कोई तो रीजन है, राइट? कोई तो उसकी नीड्स हैं जो फुलफिल कर रहा है, बाइकिया जो उबर नहीं कर पा रहा। आपको उसकी नीड्स अंडरस्टैंड समझने की बहुत ज़रूरत है। क्या वो गोल अकॉम्प्लिश करना चाह रहा है? क्या उसका गोल राइट कंप्लीट करना है? मे बी यस, ठीक है। जब तक आप यूज़र की नीड्स नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक और चीज़ है, मेन थिंग। मैंने तो जब भी कोई नए प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हम कर रहे हैं यार, इस तरह फीचर करेंगे, यहाँ से हमारा ड्रॉप डाउन आएगा, ये हमारा मेन्यू खुलेगा, ये होम चीज़ होगी, वो होगी। हमारे डेवलपर, स्टेक होल्डर्स, डिजाइनर सबके साथ जो मीटिंग हो रही होती है, हम सब करते हैं इस तरीके से प्रॉपर, इसका यूआई होगा, ये कलर्स होंगे, ये टोपोग्राफी होगी, ये आइकन्स आ रहे होंगे, ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी assumptions हम ये देंगे, वो देंगे। बट व्हाट यूजर वांट, just give me something that gets the job done easier and faster. That's the main thing. Identify user need. Who are your users? User कौन है मेरे? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में आके? Why do things matter to them? मतलब क्यों वो आए इधर? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन है? क्या उनका गोल है? वो जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। शही, फिर से वाई, जितनी जल्दी हो सके वाई को क्लियर करें, आप तभी कामयाब हैं। अच्छा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट है कि इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई स्पेंड 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। लाइक अराउंड 95% मैं अपना टाइम सोचने में लगाऊंगा, मैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझूंगा, क्या गोल है, और आखिरी का 5% जब मुझे प्रॉब्लम समझ में आ जाए, जब मेरा वाई क्लियर हो जाए, मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। Acha, I would like to say something here. A lot of us as designers, when we start, or people who want to start in design, we always think design is about aesthetics, how a certain thing looks. But in reality, we're more than pixel pushers. We're problem solvers, right? We want to solve problems that we understand our users are having. So in that, उस हिसाब से ना, it's always better to first understand what the problem is and then jump to the solution. बिल्कुल। Okay. Over to you, Sherry. User research. The second part after a discovery session or understanding the objective of why we're doing or why we're designing something is user research. Usually this part can be done before or after a discovery session, because there are two things that we do in this in user research. One is that we want to get closer to our users to understand why we're creating a product and how it can help our user base. Or it could be just us talking to our users and trying to understand that the assumptions that we made वो सही है कि गलत है, right? So basically the discovery session and user research go hand in hand, and it's like you want to validate or want to know why we're doing something, as Rana mentioned, why we're doing something, how it can help solve a problem. So as the slide mentions, user research helps in involving users in the design process to understand their needs and their pain points. So
when I say involve users, why do we need to involve users in UI and UX? I'll give you guys a brief minute maybe to see if you guys know why, as designers, we need to add users in our design process. बेहद भी बता दें, कोई इशू नहीं है, लाइक प्लीज कुछ एंटर करें ताकि हम आपको और सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम. There's a certain lag, I guess. या तो उस वजह से we get things out a little, we get things later, a little bit late. So I would say why it's important to add users to your design process is, again, let's go back to Samsung and think of Samsung creating their phones without a camera. Would you buy a phone without a camera? I don't think you will. We all use our phones for everything related to pictures. Some people just buy bigger phones, they just buy iPhones because they like the camera. More than interface, they prefer the camera. Now, with time, these companies have come to understand that taking pictures is a user need that uh, they just cannot leave, right? Without having a camera on your phone, you won't buy that phone. So that's why it's important to understand what the user needs, involve them in the process, and then design. There are two new comments. In order to get better understanding of your use. Yes, Sana Bukhari, you're totally right. totally right. Huh. I would love if we have Sana's answer on as a banner, because Sana, you've done a great job. Good job. So there are certain types of user research and methods that we do. So when we talk about user research the types, we have two. We have qualitative research and we have quantitative research. So these are very big words. I always found it very hard, very hard to keep these in my mind, but it's very simple to understand. When we talk about quantitative research, we talk about how much how much users are facing a certain problem. So quantitative is quantity. So quantity के हिसाब से आप देखते हो कि ये जो एक प्रॉब्लम एक यूजर बेस जो फेस कर रहा है, तो कितने यूजर्स वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और व्हेन यू कम विद अ सॉल्यूशन आपको समझ में आता है कि हाउ मच हैज दिस सॉल्यूशन वर्कड. So when we talk about quantitative research, we try to understand in terms of numbers कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही. But how do we do quantitative research? That is something I'm going to come to after I tell you guys what qualitative research is. So when we talk about qualitative research, it helps us answer questions as why and how a problem can be solved. So once जब आप quantitative research करते हो और आपको पता चलता है कि यार मेरे अगर आपका यूजर बेस फॉर सपोज इज 50 people, and from those 50 people 30 people are facing a certain problem, ठीक है, that is quantitative research. You have the numbers, and then you, alongside quantitative research, you do qualitative research in which you come to know why are they facing that problem. And when you come with this when you find a solution for that problem, you then do qualitative research and see how that problem can be solved. So you solve it, and then we come to know from quantitative research that how much that solution has worked. Big words, a lot of explanation, it gets confusing. I understand, I have been there too. So I'll come to methods of how you can do qualitative and quantitative research. Before I move on, I like this quote very much by Jacob Nelson. He says, pay attention to what users do, not what they say. So why is this quote very good? I'd say because sometimes our users say they find something very hard to do. But when you go to them and you see in their natural habitat कि वो उस phone पे उस app के साथ क्या कर रहे हैं, then you get a better understanding of why they are facing that problem. So to do quantitative or qualitative research, you have tons of ways you can do qualitative quantitative research.
as long as I remember, there are like 20 methods, but the most common ones and the ones that we have used and we use is focus groups, interviews, email surveys, intercept surveys. So, for suppose you want to know, you've come to know from your data that has been collected from a survey that you push on your website, जैसे आपकी स्कूल की वेबसाइट है, एंड दे वांट टू नो हाउ यू गाइस आर, आप लोग अपनी जो अटेंडेंस है वो कैसे डाल रहे हैं, एंड इफ दैट अटेंडेंस इज हेल्पिंग यू आउट और नॉट. सो फॉर सपोज इन रूरल एरियाज यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें अटेंडेंस फिजिकली लगती है कि आप वहाँ पर मौजूद होते हो. द टीचर आस्क्स योर रोल नंबर एंड देन यू से you're present or you're not present, right? And they mark that roll number और वो शीट फिर आगे जाती है admin block or somewhere. But a lot of places in like Karachi and Lahore, वगैरह, in urban areas, it's like you have in some universities you have this biometric thing going on. So to understand if that works or not, you can have a survey. From that survey, you'll come to know if this solution of biometric in comparison to the old method जिसमें आपके पास forms थे, is it working out or not. So that is one way you can conduct user research. And other would be, for suppose I want to start an app जिसमें I want to see, I want to help you guys manage your expenses. So even before I start creating that product, I have an idea, but I need to know कि ठीक है मुझे बनाना है एक ऐप जिसमें आपका एक्सपेंस मैनेज हो रहा है रोजाना का. But why would you need that app? And what exactly will help you in your expense management? Would you want a day-to-day expense management? Would you want a monthly expense management? For that, you could do interviews, जिसमें as a researcher, you go to participants or your target audience, you talk to them one-on-one, you try to understand what's right and what's wrong, what you need. That's how you'll do your research. Other methods would be email surveys, जिसमें आप ईमेल में क्वेश्चंस भेजते हो, एंड देन यू हैव फोकस ग्रुप्स जिसमें आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यू हैव अबाउट 3 to 12 पार्टिसिपेंट्स कमिंग इन योर ऑफिस और अ सर्टेन प्लेस. वहाँ पर उनको बिठा के यू आस्क देम फॉर फीडबैक, यू आस्क देम यू वांट टू डू दिस, what's going to help you, is it something that's going to help you, is it something that you really need. So that's how you'll come to understand कि यार if you want to do something or not. These were some methods of user research. So before I move on, I would say okay, if Samsung wants to know how many people are using their night mode in their camera, so what research method will they use? If not research method, just tell me कि कौन सा research का type is this जहाँ पे you want to know कि कितने लोग जो हैं वो इस feature को use कर रहे हैं. I'll repeat the question. It's like Samsung के phones में अब आ गया है night mode in your camera. Okay, Samsung wants to see how many people are using that feature. So what type of user research would that be? Rana, do we have any answers? Yeah, I think we do. We have one from Larib and one from Sana. Lareb, what is Lareb saying? Quantitative, and same Sana Isha same. So they both saying it's quantitative? Yep. Okay, cool guys, which means you guys are freaking understanding it. I like it. So moving forward to design phase where we get hands-on with UI, then that'll be covered by Rana. Finally, design जिसके लिए सब बैठे हुए हैं, like क्या डिजाइन करना है. So moving on, तो डिजाइन एकदम से देखें जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, it's not like आप दम से आप काम करने लग गए, फिग्मा खोल रहा है जिसमें आप डिजाइन कर रहे हैं, तो it is a certain process आप काम करते हैं. ठीक है, they're like mood boards, sketches, wireframe, हम सब कवर करेंगे. तो what is mood board? मूड बोर्ड एक तरह से कह सकते हैं, तरह एक इंस्पिरेशन के तौर पर हम यूज करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर मुझे मेरा जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, मैं रिसर्च कर चुका हूं, लाइक मुझे पता है कि मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं एक नई बाइक या बना रहा हूँ. ठीक है, मुझे पता है कि मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो मोबाइल के एप्लीकेशन में क्या क्या मैं चाहूँगा, उसमें मैप हो, बॉटम नेविगेशन हो,
अच्छा, बॉटम नेविगेशन के मुझे आइडियाज चाहिए इंस्पिरेशन के लिए कि हमें कहाँ से, किस तरीके की मेरी बॉटम नेविगेशन हो, कहाँ से खुले, गाड़ी किस तरह चलती हुई आए, तो इसकी मुझे इंस्पिरेशन चाहिए होंगे, राइट? एकदम से हर एक के आइडिया नहीं आता। कभी ये जब स्टार्ट कर होते हैं आप बिल्कुल एकदम से ब्लैंक हुए हुए होते हैं, तो आपके तो आइडिया करने के लिए, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए किस तरीके आपकी ऐप होनी चाहिए, किस तरह लुक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मूड बोर्ड्स करते हैं। मूड बोर्ड बेसिकली आप एक इंडिविजुअल लेवल में भी कर सकते हो या एक ग्रुप के साथ भी मिलकर कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ वेबसाइट हमें लिखी हुई हैं, और dribble.com, बेहेंस एंड प्रिंटर्स, और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, इवन गूगल लाइक सुपर, आप कुछ भी आपको चाहिए वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक इफ यू लुकिंग फॉर अ मैप एप्लीकेशन मैप, तो सिंपली आप ड्रिबल में आप मैप लिख सकते हैं, बहुत सारे आपको इंस्पिरेशन के तौर पर शॉर्ट्स निकल आते हैं। आई थिंक अगर शायद अगर तुम अगर इनको दिखा सको तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? नहीं, अगर तुम Okay, for sure, for ड्रिबल sure, पे for sure. I am showing you guys. So, hmm, यहीं पे अगर ड्रिबल लिख दो, one way to get your inspirations for your mood board will be to go to ड्रिबल dribble.com. Now सिंपल you जिस see a तरह, lot of you see हाँ that a lot of designs are here, but as Rana mentioned, for suppose you want to know कि आप किस किस तरीके से एक bottom navigation बना सकते हैं. Now what a bottom navigation is, वो मैं search करके भी आपको बता देता हूँ. तो when you use Instagram, I guess we all use Instagram, right? बिल्कुल, उसके नीचे ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज कह सकते हैं हम उसको, बिल्कुल. बिल्कुल, तो उसमें ठीक है। नीचे आ रहा होता है कि एक्सप्लोर का एक सर्च का आइकन आ रहा होता है, देयर इज अ आइकन जिसमें आपका खुद का चेहरा बना है, दैट्स योर प्रोफाइल. सो दैट पार्ट इज योर बॉटम नेविगेशन. And as you can see, by just searching bottom navigation on Dribbble, you have tons of ideas on how you can design a bottom nav. बिल्कुल। अच्छा, I'll go back आपको to the रिसर्च करनी तो हाँ, बस इसमें फिलहाल इसी में 1 मिनट के लिए रहना। लाइक आपकी आप क्लियर हो चुका है अपने बॉटम नेविगेशन में क्या चाहिए, तो अब स्टाइलिंग किस तरह होगी। लाइक मुझे बॉटम नेविगेशन के बहुत मल्टीपल स्टाइल्स हैं। लाइक मुझे फ्लोटिंग स्टाइल भी चाहिए, लाइक जो किसी बॉटम और लेफ्ट साइड से फिक्स नहीं होता, वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, उस तरह का चाहिए मुझे। अगर मैं सेल पे क्लिक कर, जैसे ये सेल और रीलोड पे क्लिक कर, तो क्या किस तरीके की मुझे इसकी इंस्पिरेशन चाहिए। लाइक अगर मैंने मोर का, तो किस तरह एक्सपैंड हुआ मेरा बॉटम नेविगेशन, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ के हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी लारेब ने कहा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज़, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें इस तरीके से, ठीक है, मेरी हैमबर्गर मेन्यू है, अगर लेट्स सपोज मेरे पास हैमबर्गर मेन्यू है, तो वो किस तरीके से एक्सपैंड होकर खुलेगा, वो कोलैप्स किस तरह होगा, तो इसके हम मुख्तलिफ आइडियाज़ यहाँ से एक गैदर second, करते हैं। I'll just show you guys what व्हाट हैमबर्गर्स है ना, hamburger menu is, या क्योंकि these are some terms you guys will come to know. So जब आप menus की बात करते हैं ना, तब you have a lot of menus, और उनमें से एक है hamburger menu. आई थिंक सबने लाइक देखा होगा, ट्रिपल लाइन्स जो आ रही होती हैं उसको हम हैमबर्गर्स बोल रहे होते हैं। या Let me find it. है ना, मेरे ख्याल से जो आपकी वो बनी हुई है ना एक डिज़ाइन, इन जिसमें आपने अभी शेयर भी किया है इधर इन द प्रेजेंटेशन, उसमें प्रेजेंटेशन में, भी. अच्छा उसमें आएगा तो हम इसमें वहाँ पे दिखा देंगे। हाँ ठीक है, मैं आ गया होता हूँ. स्विच कर लेंगे, आई थिंक आगे स्विच करते हैं स्केच पे। अच्छा, This part where is your hamburger menu. दिस हैमबर्गर। तो बेसिकली स्केच होता है, अब कुछ डिजाइनर्स इस पे स्विच करते हैं, कुछ नहीं करते प्रेफर। आई डू प्रेफर कि जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, हम लोग यूजुअली मीटिंग्स हो रही होती हैं, हम लोग वहीं पे हम लोग को आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो बेटर कि अगर आप उसको पेपर पे स्केच कर लें, रादर देन कि आप उसको फिग्मा वगैरह में प्रॉपर टूल्स के थ्रू कर रहे हो। बिकॉज थिंग इज कि आप लोगों ने पहले सोच रहे होते हैं, तो उसको वहीं पे आइडियाज आ रहे होते हैं, और जब तक आप इसको बनाने जा रहे होते हैं, तो तब तक आप क्या जहन से निकल चुके होते हैं, और लाइक क्या सोच कर आया था मैं, क्या बना रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो स्केच आपको एक लाइक जो भी आपने आइडिया आपके जहन में आए, उसी वक्त आपको नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको अच्छा याद रहता है कि ठीक है मैं क्या सेटअप कर रहा था। ये आपकी स्केचिंग लाइक इसलिए जैसे पेंसिल अब पेन से कर रहे होते, इसके लिए कोई यूजुअली टूल यूज़ नहीं कर रहे होते। अच्छा, स्केच एक बेसिकली, अगर आप थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा हूँ, स्केच एक टूल का नाम भी है, जस्ट लाइक XD एंड फिग्मा। तो एक स्केच भी कलर टूल है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। सही, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, Rana, before I move on, Larib Alam asks us if mood board means brainstorming of an idea. यस लारेब, यू आर राइट। So, Larib, idea इस हिसाब से कि as a designer you have tons of ideas coming to your head, and even if you don't have ideas coming to your head of how your product should look visually, तो basically yes, mood board यही होता है कि आप लोग using Dribbble, Behance or these websites to see what existing designers have done to make a product. तो वहाँ से you get inspiration, you start some
you create a mood board, a board where you have all of these inspirations to start your brain's idea generation of how you would want to design your product. जो कल हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे, लाइक वर्कशॉप जो हम हैंडल्स करवा रहे होंगे, तो उसमें हम मूड बोर्ड भी बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग को एक और व्यूज मिल जाए कि हम किस तरीके से मूड बोर्ड पे Yeah, करते for हैं, sure. है ना। बातों में तो समझ आप लोगों ने समझ में नहीं आ रहा कि मूड बोर्ड ठीक है, हम अब आपको तक कहाँ रखें, उसको किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, तो हम प्रॉपर हम दिखाते हैं। अच्छा, मूड बोर्ड के बाद एक होता है लो फिडेलिटी वायर फ्रेम, उसको कुछ लोग लो फिडेलिटी डिजाइन भी बोलते हैं और वायर फ्रेम भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं। सो बेसिकली वायर फ्रेम आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है, आपकी फाइनल प्रोडक्ट है, उसका एक स्केलेटन वर्जन होता है। इसमें आप कलर्स और आइकन वगैरह पिक्चर्स का ख्याल नहीं कर रहे होते, जिस आप दिखते बिल्कुल प्लेन होते हैं डायग्राम, टू जस्ट गिव एन आइडिया कि स्टेक होल्डर्स की एप्लीकेशन किस तरीके की काम करेगी, इस तरह के उसमें हमने फीचर्स ऐड करे हैं, उससे आपको थोड़े बताने में मदद करती है। जैसे स्केच आपने करा, आपने पेंसिल में कर दिया, बट आप पेंसिल की डिजाइन आप आगे तो लेके शो नहीं करवा सकते ना किसी को, तो अब हम इसको वायर फ्रेम पर स्विच कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वायर फ्रेम में टाइम भी कम लग रहा होता है, बिकॉज हम लोग कलर्स वगैरह पिक्चर्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते उस वक्त। और वायर फ्रेम हमें, क्योंकि जब आप डिज़ाइन कर रहे होते, जैसे शेरी ने पहले जब बताया डिज़ाइन प्रोसेस पे कि बहुत आइट्रेशन आ रही होती हैं, आप बार बार फीडबैक लेते हो, फीडबैक आती है फिर चेंज करते हो, तो इट्स बेटर कि अगर आप वायर फ्रेम में कर लो, सिंस उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती तो उसको आराम से चेंज कर सकते हो। वरना हाई फिडेलिटी में जब आप जाते हो लाइक फुल कलर्स पिक्चर्स में, तो उस पर आप कलर्स कॉम्बिनेशन में, कलर कंट्रास्ट में फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास वायर फ्रेम पे आप सब कुछ फाइनलाइज कर लो, ताकि बाद में आपको आपका टाइम, आपकी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। अच्छा, और हाउ एक मूड बोर्ड बनाना, फिर स्केच बनाना और लो फिडेलिटी बनाना, हाउ आर दीज थिंग्स कनेक्टेड? वो ऐसा है कि जब आप मूड बोर्ड बनाते हो टू गेट योर ब्रेन फ्लोइंग विद आइडियाज, जब आप मूड बोर्ड आपके आगे करीब होता है ना, फिर आपको समझ में आ रहा होता है कि ठीक है यार, मेरे पास ये तरीके हैं जिससे मैं अपने डिज़ाइन बना सकता हूँ। सो टू पुट योर आइडियाज ऑन पेपर or on a screen, you do wireframing or you just make sketches of the things that you have in your head. So we have a question from Sana Bukhari ke low fidelity is equal to rough draft of your idea, if I'm right. टेक्निकली आप कह सकते हैं लो फिडेलिटी, इसको मिड लेवल पे कह सकते हैं, जो लो फिट वायर फ्रेम जो होता है, लो बिल्कुल जो बहुत जो ड्राफ्ट जो होता है वो पेंसिल में भी कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग हर का अपना अपना प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ जो पेंसिल में करते हैं, कुछ सीधा लाइक वायर फ्रेम में जंप कर रहे होते हैं। तो हाँ, अब यहाँ से हम लोग आइडिया अपने जनरेट भी कर रहे होते हैं, हम ड्राफ्ट कर होते हैं क्या ठीक है, इस तरह से हमारे, जैसे हम बॉटम नेविगेशन की बात करें तो हमारे इस तरह से खुलेगा, इस तरह होगा। और जी फरजाना जुहैर से आपने कहा कि इनिशियल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, तरह से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप इनिशियली अपने आइडियाज़ को आप गो थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, एक ये एग्जांपल है कि वायर फ्रेम्स की जो थी, जैसे देखें कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन में इतना फोकस नहीं करा, जैसे गिवन आइडिया के अगर मैं एक ऑनलाइन स्टोर की है, ठीक है, किस तरीके से मेरे पास पूरी कैटेगरीज आ रही होंगी, फिल्टर किस तरह अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, और अगर मैं स्केच टॉप राइट पे, सॉरी बैक करना, टॉप राइट में मेरे पास शॉपिंग कार्ट का आइकन है, उस पर क्लिक करूँ तो किस तरीके से मेरे पास एक पॉपअप खुल के आएगा, राइट। तो वो एक हमें पूरे वायर फ्रेम हमें मदद करते हैं, रादर देन कि हम पूरी मेहनत करें, तस्वीरें करें और बाद में हमें मालूम हो कि हमारा डिज़ाइन अप्रूव नहीं हुआ या चेंजेस है क्या, हमारे यूजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। इट्स बेटर कि आप यहीं पे काम करते रहते हैं, फिर आप एकदम आगे जंप करते हैं। शरी, नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज वेयर ऑल द मैजिक हैपन। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जब आपके वायर फ्रेम अप्रूव हो जाते हैं, आप जब डिज़ाइन लॉक कर देते हैं कि ठीक है, लाइक ये मेरा प्रोसेस है या इस वेयर आई एम गोइंग टू गो विद, तो यहाँ पर आप कलर्स पे हाई फिडेलिटी डिज़ाइन में स्विच करते हैं। जो बेसिकली आप जो लाइक डिज़ाइन आप यूजुअली एप्लीकेशन में देख रहे होते हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई भी XYZ एप्लीकेशन करते हैं, वो बेसिकली हाई फिडेलिटी डिज़ाइन है एप्लीकेशन का। इसमें आप कलर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, टाइपोग्राफी में फोकस करते हैं, बटन्स किस तरह होंगे, आपकी वेबसाइट है, आपकी इवन आपकी एप्लीकेशन है, उसमें किस तरीके का उसका लेआउट होगा, इसमें आपका प्रॉपर एक तरह का फोकस होता है। अगर ठीक है, अगर मेरे पास एक बॉटम नेविगेशन है, बॉटम शीट्स ऊपर से मेरे पास खुल रही है, तो हम जब डिज़ाइन कराएंगे तो कल प्रॉपर चीज़ आपको हम करवा के दिखाएंगे वो किस तरीके की उसमें रखी होती है। प्लस अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और बताते चलूँ कि जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लाइक इट्स फॉर अ वेबसाइट और एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के, देयर सर्टेन रूल्स कि आपको फॉलो करने होते हैं। प्रिंट मीडिया
पे और यहाँ पे डिफर ये होता है प्रिंट मीडिया में। ठीक है, जैसे लाइक सपोज मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ तो मुझे मुझे किसी ने बोला कि लोगो को ऊपर कर दो या टेक्स्ट को राइट पे कर दो, ठीक है मैं कर सकता हूँ, उससे मेरी कुछ इशू नहीं होना, प्रिंट तो सेम हो जाएगा। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया पे आते हैं, जब आप एप्लीकेशन पे वेबसाइट पे आते हैं तो देयर सर्टेन रूल्स, जैसे कि कुछ मार्जिन होती हैं, कुछ स्पेसिंग का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो वो कल जब करेंगे तो हम आपको पूरा इस पर वॉक थ्रू भी देंगे कि वो क्या स्पेसिंग होती है। 12 कॉलम ग्रिड जो वेबसाइट पे, अगर आपने बूटस्ट्रैप जो डेवलपर्स यहाँ पर होंगे, बूटस्ट्रैप क्या होता है, उसकी जो 12 कॉलम ग्रिड्स किस तरह काम कर रही होती हैं, मोबाइल पे हम लोग को सिर्फ स्पेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो उसके और बताएंगे। इसके लिए थोड़ा टूल्स के बारे में आपको क्या पता चलो, इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं। प्रीवियसली बहुत पहले टाइम पे फोटोशॉप यूज होता था, सबसे पहले फोटोशॉप था, देन इलस्ट्रेटर, देन स्केच, XD, फिग्मा, ये सब चीज़ें। फोटोशॉप बहुत अच्छा टूल है, सब यूज़ करते हैं, बट फोटोशॉप का एक ड्रॉबैक ये है कि वो राफ्टर इमेजेस देता है, और राफ्टर बेसिकली रास्टर होती हैं, और जो हम लोग जो इलस्ट्रेटर और फिग्मा, XD जो है, स्केच है, वो वेक्टर इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। सेट राफ्टर बेसिकली जो इमेजेस होती हैं, बहुत जूम करते हैं, पिक्सेलेटेड हो जाती हैं। अगर आपने बहुत नोटिस करा होगा पिक्चर की इमेजेस के पिक्सल्स ऑफ हुए हों, तो लाइक वो स्क्वायर स्क्वायर में आपको शेप दिखाते हैं, तो रादर देन जो वेक्टर होता है वो स्मूथ सरफेस आपको कन्वर्ट करके दे रहा होता है। तो अगर जब उसको एक्सपेंड करते हैं, आपको पिक्सेलेटेड पर फॉर्म नहीं हो रही होती, तो ये एक आपका ड्रॉबैक था फोटोशॉप का। क्या पहले एक स्क्रीन में बनाते थे, जिसको मल्टीपल स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से दोबारा से डिज़ाइन क्रिएट करे होते थे। तो XD और फिग्मा में आप एक ही मरतबा डिज़ाइन बनाते हो, वो आप हर रेजोल्यूशन के हिसाब से, वो अगर SVG है, वेक्टर है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और शरी एक साइड बैक जाओगे, एक साइड बैक जाना, और एक और वायर फ्रेम के मैं टूल्स बताना भूल गया था कि यहाँ पे कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। सो वी हैव मल्टीपल टूल्स फॉर वायर फ्रेम राइट नाउ। सो वी हैव स्केच, फिग्मा एंड XD। तो स्केच, फिग्मा, XD तो तीनों सरफेस के लिए यूज होते हैं, फॉर लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, सब कुछ। वी हैव फ्रेमर एंड बाल्समिक एज वेल। तो फ्रेमर और बाल्समिक यूजुअली फॉर प्योर वायर फ्रेम की तरफ यूज हो रहे होते हैं। बहुत ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनको फिग्मा और XD पे इतना नॉ नहीं होती, तो वो सब बाल्समिक यूज करती है। शरी नेक्स्ट स्लाइड, प्रोटोटाइप वन। अच्छा, ये थोड़ा रिव्यू था कि किस तरह हम वायर फ्रेम कर रहे होते हैं। सबसे पहले जब मेरा डिज़ाइन लॉक हो गया, फिर हम उसको किस तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर मैं पिक्चर वाली साइड पे फिर मैं काम करता, मुझे फीडबैक मिलती कि इसमें लेट सपोज कि पिक्चर सही नहीं है, बैकग्राउंड चीज़ नहीं है, वो लेआउट ख़राब है, मेरी मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती, ठीक है। रादर देन कि मैं वायर फ्रेम में काम करूँ, मुझे इतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। हाँ, वैसे लारे यू राइट, इनविजन इज ऑल्सो गुड फॉर वायर फ्रेमिंग एज वेल। ये चीज़ें आपकी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, वी हैव टोपोग्राफी। तो हम लोग जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सर्टेन टेक्स्ट फील्ड जो हम लोग डिसाइड करते हैं, हम पहले जब भी हम लोग एक डिज़ाइन लाइब्रेरी भी बना रहे होते हैं, हम बाद में आपको चला के दिखाएंगे किस तरह डिज़ाइन लाइब्रेरी बनती है। तो हम सर्टेन टेक्स्ट की वेज और हाइट, उसकी जो फॉन्ट्स की जो हाइट है वो सेट करते हैं, लाइक 16 पिक्सल का होना चाहिए, 24 का, ताकि कंसिस्टेंसी आपके डिज़ाइन आपके एप्लीकेशन में रहे। नॉट लाइक कि आप बार 12 आपने कहीं पर 12 करा, फिर कहीं आप 13.5 पे शिफ्ट हो गए, फिर 14 पे शिफ्ट हो गए, तो कंसिस्टेंसी आपके एप्लीकेशन में आ जाती है। तो इट्स बेटर कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो आप इसके अपनी टाइपोग्राफी पे ज़्यादा बहुत ख्याल रखो। आप प्रॉपर आप डिफाइन कर देते हो कि लाइक फॉर H1 फॉर मैं हेडिंग में ये फॉन्ट यूज़ करूँगा, उसका साइज़ ये होगा, फॉर बॉडी और फॉर सबटाइटल में ये फॉन्ट यूज़ करूँगा, ये वगैरह। तो इससे मेरी एप्लीकेशन को एक क्लीन लुक भी मिलती है, कंसिस्टेंसी जो मेरी चीज़ होती है वो भी बरकरार रहती है। शरीफ नेक्स्ट स्लाइड। बटन्स, सेम चीज़, जो कंसिस्टेंसी की बात हुई थी, तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे बटन्स आ रहे होते हैं, राइट। कुछ बटन्स तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नॉट लाइक अगर मैं आपको एक एप्लीकेशन में दे रहा हूँ तो लुक एंड फील के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर बहुत बटन्स हैं, एक का साइज छोटा है, एक का बड़ा है, एक की विड्थ बहुत बड़ी है, एक की हाइट बहुत बड़ी, तो वो ऑल दो काम कर रही होंगी इन देयर ओन मीन्स, वो काम कर रही हैं, बट जो UI के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लुक एंड फील है वो उसमें वो सही से नहीं बैठ रही। लाइक हाँ, कुछ बटन्स होते हैं कि उनके अपने मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल बटन में फिल वाले बटन, जो एक्सेल बटन लिखा हुआ है, और द आउटलाइनर और टैग, जब तीनों जगह पे यूज होते हैं तो इन तीनों का अपना अपना एक पर्पस होता है। फिल जब वाला तब यूज होता है जहाँ पे अगर तीनों बटन यूज हो रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी, आप चाहते हैं कि यूजर फोकस करे फिल वाले बटन पे, वहाँ पे कोई मेन बटन है। लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक पॉपअप आया कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, बस दो बटन आएंगे, वन इज कंफर्म, सेकंड वन इज कैंसिल।
राइट? तो कंफर्मेशन वाला जो मेरे पास जो बटन है, लाइक वो मेरी हाई प्रायोरिटी, तो उसको मैं फिल पे यूज करूंगा रादर देन कि मैं इसको स्टाइल और आउटलाइन की तरफ लेके चले जाऊँ। तो ये एक छोटा सा और रूल था। शरी, टेक्स्ट फील्ड के बीच आप इस तरीके से आप काम कर रहे हो तो देयर 4 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फील्ड जब यूज कर रहे होते हैं। एक डिफॉल्ट पे अगर एक सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे रखी हो तो उसकी क्या लुक एंड फील होगी, वो किस तरीके से काम हो कर रही होगी। ठीक है, फिर जब आपने उसको क्लिक करा, जब आपने उसको क्लिक करा या फिर आपने उसको हवर करा, तब उसकी क्या स्टेट होगी, ये काम हमारा बताना। तो डेवलपर के लिए काम डेवलपर पे सोचता रहे कि अच्छा हवर पे क्या करूँ करवाऊंगा, फोकस पे क्या कराऊंगा, डिसेबल पे क्या होगा। तो इट्स आवर जॉब कि हम डेवलपर को बताएं कि डिफॉल्ट स्टेट इसकी टेक्स्ट फील्ड की ये है, जब मैं इस पर हवर करूं तो इस तरीके से हो जाए, जब एरर आए मेरे पास तो वो इस तरीके से हो जाए। ठीक है, जब सक्सेस मैसेज किस तरह आएंगे तो ये। अच्छा, ये फिर हम कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट में। जब हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अगर आप एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर जो वेब पे भी होनी है, जो मोबाइल पे भी होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो कंपोनेंट हम वेब के लिए यूज़ कर रहे हैं वही सेम कंपोनेंट हम लोग मोबाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो जो बात है, कंसिस्टेंसी आपकी सेट रहे। शरीफ, Just by the way, Rana, Sana Bukhari says balsamic mockups can also be used for designing low fidelity wireframing. यस, That's बिल्कुल true. बिल्कुल बिल्कुल, यस सना, यू आर And एब्सोल्युटली राइट। a shout out to my friend Hadi Sumro who's watching. Hey man, what's up? Okay, Rana, you can continue. श्योर। अच्छा, ये भी लाइक वो एग्जांपल था, प्रोटोटाइप कंपोनेंट्स हम बना रहे होते हैं, किस तरीके से आपकी स्टेट पे होगी। अगर लाइक अगर आप देखें यहाँ पे कोई एक्शन के बटन है प्लस पे किस तरह का होगा, अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो मुझे फेल हो जाए, डिफॉल्ट स्टेटस किस तरह है। तो ये एज ए यूआई डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है कि अच्छा, इसका यूआई किस तरह होगा, डिफॉल्ट एक्शन क्या होगा, हवर पे क्या होगा, डिलीट करूँगा तो क्या होगा, हवर वगैरह वगैरह मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ डिज़ाइन करते हैं। सही। Now comes the best part, the connecting the dots वाली जो कहानी होती है, यूजुअली पर्सनल पार्ट होते हैं। आपने दो तीन डिज़ाइन बना दिए। अगर मेरे पास सपोज जैसे यहाँ पर है कि हैमबर्गर मेन्यू बना, ठीक है। अगर आप देखें जो कार्ड 3 के टॉप राइट पे 3 लाइन्स वाली, दिस इज व्हाट हैमबर्गर इज। तो यूजुअली यूज फॉर मेन्यू काइंड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब मुझे बताना है यूजर के जब मैं इस पर्टिकुलर एरिया में क्लिक करूँ तो ये हो, राइट। यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक मेन्यू ओपन हो जाए। तो ये मेरा काम है यूजर को बताना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ मेरा मेन्यू इस तरीके से ओपन होता है भाई। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक पॉपअप आ जाए ऐड टू कार्ट का, वो किस तरीके से आएगा, वो या तो एक ओवरले के तौर पे आ रहा हो, या वो नीचे से ऊपर आएगा, बीच सेंटर में रुकेगा, या बिल्कुल फ्लैश करता रहेगा। तो ये पूरा हम डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए भी टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, फिग्मा भी यूज़ होता है, एक्सडी भी यूज़ होता है, स्केच भी और इन्विजन भी यूज़ होता है। और आगे अच्छा, ये कोड थी क्या स्टीव जॉब्स की तरफ से कि most people made the mistake of thinking design is what it looks like. People think it's the veneer that the designers are handed this box and told make it look good. That's not what we think design is. It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Like UI तो बन गया, एक्सपीरियंस क्या था, क्या मेरा टास्क फुलफिल हुआ, किस तरीके से फुलफिल हुआ, दैट्स द मेन थिंग। ये काम आपका होना चाहिए। शरी, Okay, user testing. So once we're done with the design phase, basically when we say design, we're talking about UI. So once we've created the UI, now we have a prototype which we saw in the last screen, in the last slide. जिसमें आपने define कर लिया है कि if you tap on this, this happens. If you tap on this button, this happens. But that's what we know, and that's how we've created it, right? Do we know if our users find it as simple as we do? So for that, we do user testing. So what exactly is user testing? So user testing is an approach that we use to evaluate a product by testing it out on our users. We give that prototype or model to a certain user base. We go to them, either we go to them, we call them, but the main idea is to give them a prototype or a model in their hand to use the product and see if they can perform certain tasks. So when you have users come in, you give them your prototype, and then you ask them to complete certain tasks, and from that behavior
and from the way they use the app, you come to know if अगर आपने ये हैमबर्गर मेन्यू बनाया था फॉर एक ओवरले पूरी मेन्यू खोलने के लिए, सो इज दिस समथिंग दैट द यूजर्स फाइंड इजीली, और इज इट समथिंग के फॉर सपोज दे वांट टू सर्च, तो अभी तक इस स्क्रीन में सर्च कहीं भी नहीं है. सो इफ अ यूजर थिंग्स के जो आपका ऐप है, फॉर सपोज ई कॉमर्स है, जैसे यहाँ पे ई कॉमर्स ऐप है, तो उसको कुछ खरीदना है, सो ही वांट्स टू सर्च दैट प्रोडक्ट, बट यहाँ पे वो सर्च वाला ऑप्शन जो है वो इस हैमबर्गर मेन्यू के पीछे है. तो एज यूजर्स दे we as designers think what we've created is the best. We need to test it out with our users to see if they find it easy to use, if they also think it's the best solution for certain problems. I'll give you an example on a product that I've been working on. So at Bazaar, we have a product called Easy Khata. Easy Khata is a product where we give retailers the ability to manage their khata on a cell phone. So अभी जितने भी retailers वगैरह होते हैं, या आप लोग भी अपना कोई उधार के हिसाब किताब अगर रखते हो दोस्तों यारों में, तो यूजुअली वी राइट और सेंड रिमाइंडर्स, या तो हम लोग एक कॉपी लेते हैं उस पर सारा रिमाइंडर बनाते हैं. ठीक है. सो इजी खाता, विद इजी खाता वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ people having to carry their notebooks, or basically retailers, not people, where our target audience is retailers, कि वो किताबों पे चीज़ें लिख रहे हैं और वो चीज़ें जो हैं कभी कभी किताब गुम हो जाती है या पन्ना फट जाता है, तो वो सारी डेटा उनकी जो हिसाब किताब है वो एक ऐप पर हो. सो फॉर आवर MVP, दैट इज़ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, कि जिसमें आप अपना ऐप बना देते हो कम से कम फीचर्स में, कम से कम ज़रूरी फीचर्स में, और आप वो ऐप ले जाते हो. तो when we created our app, तो before having it developed, we had created a prototype. तो जो prototype था उसमें initially we had the customer add करें button written in Urdu, and the button as a wide button that covers almost the full width of the screen. So our assumption was कि users will find it easy to find this button, but when we went to retailers, हम दुकानों पर गए और हमने उनको ये प्रोटोटाइप दिखाया, तो हमें ये समझ में आया कि यार उनको तो ये बटन नज़र ही नहीं आ रहा. सो टू सॉल्व दिस व्हाट वी डिड इज वी एडेड एन आइकन and button text which is add customer. So why we did not go with Roman Urdu here is because we understand from our ground research and testing, we understood that these people don't read a lot. The retailers, they don't read English or Roman English, or maybe mostly Urdu. What they like is pictorial representation of things. So if you have a plus icon, they understand by अगर मैं plus icon दबाऊंगा तो मैं कोई ना कोई कस्टमर ऐड कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ यूजर टेस्टिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि हम अपना प्रोडक्ट बेहतर कैसे बनाएं. सिमिलरली वी हैड एन अजम्पशन कि यहाँ पे आपका ऊपर टोटल हिसाब किताब लिखा आता है कि आपने टोटल कितने पैसे आपके किसी के पास उधार पे दिए हुए और कितने पैसे आपको वापस करने. We thought this was easy for users to see, but we understood by user testing, by going to the ground, giving users a prototype, कि उनको ये चीज़ दिख नहीं रही. So now we've created a different design जिसमें we give more attention to the part where we tell them their main total amounts of udhar. Finally, we have dev handoff. Rana, would you want to cover this? So basically for developer handoff there हम कुछ बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज मीन के जो आपने अभी तक बनाया, जो आपकी फाइंडिंग थी, जो आपने डिज़ाइन करा, वो डेवलपर को देखे ताकि वो उसको बिल्ड कर सके. तो यूजुअली इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी यूज़ कुछ लोग कर रहे होते हैं. देयर इज ज़ैपलिन, हाँ, तो फिग्मा और XD भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. तो ज़ैपलिन करता क्या है? ज़ैपलिन बेसिकली करता ये है कि आपको एक आपका अगर एक आइकन है, शायद अगर आप पीछे जाएंगे अपनी इजी खाता वाली, बिल्कुल जैसे यहाँ पर एक लेट्स सपोज एक सेंटर वाले में जो ऐड कस्टमर वाला बटन है, मुझे ज़ैपलिन बता देगा कि अच्छा इस बटन की पोजीशन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या उसका विड्थ है बटन का, क्या हाइट है. इन शॉर्ट टर्म लाइक मुझे अगर जो डेवलपर्स के जो CSS जो होती है, क्या कॉर्नर रेडियस होना चाहिए, क्या कितना शेडो है, क्या कलर है, वो मुझे बनाया मिल जाता है. ठीक है.
पहले जो टूल्स थे वो आपके एग्जाम्पल यूज कर रहे होते थे, अभी लाइक इंडस्ट्री में बहुत अभी भी बहुत कॉमनली यूज होते, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, बहुत बड़ी कंपनी में अभी भी वो यूज हो रहा है। अभी फिग्मा और एक्सडी में भी ये चीज़ें फीचर आ गए हैं। फॉर एक्सडी जहाँ पे आपको थोड़ी आपको एक्सटर्नल लिंक्स बनानी पड़ती है, वहाँ से आपको CSS मिल रही होती है, बट फिग्मा में बेस्ट पार्ट अबाउट फिग्मा इज के यार इट्स सो पावरफुल कि वो आपको वहीं बैठे बैठे आपको CSS दे देता है। तो यूजुअली होता ये था, अभी जिस कंपनी में हम लोग अभी बाजार में काम कर रहे हैं, तो हम करते ये हैं कि हमारे पास एक फिग्मा की फाइल जिस पर हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और वही हमारी फाइल हमारे डेवलपर्स के साथ शेयर हुई है, राइट। तो हम जो डिज़ाइन कर रहे I'll हैं tell you, sorry, I have to interrupt, but I will most probably show this to you guys. We have a lot of time remaining. So after this part, हाँ परफेक्ट। we'll move on to some questions. If you guys have any questions, we'll wait for you guys. आप कुछ अपने सवालात अगर आपके हैं तो we'll clear them off, और फिर we'll dive into Figma and tell you guys what we mean when we say कि अब आपको डेवलपर को डिज़ाइन अलग से नहीं देनी पड़ती, आपको वही फिग्मा या स्केच एक सॉफ्टवेयर टूल में आप वही फाइल उनके साथ शेयर कर लेते हैं और वहाँ से वो डेवलप करते हैं. विल टेल यू हाउ दिस हैपेंस, बट फर्स्ट आई थिंक राना, शुड वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस? श्योर। We'll wait here for like 1 minute, I guess. अभी तक आपको जो समझ में, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क, लाइक वी आर हियर फॉर यू. One thing I'll go back to is शुरुआत में as long as I remember किसी ने पूछा था कि UI UX जो है उसमें फ़र्क क्या है ना, तो हमने आपको बताया था कि यार how UI differs from UX, कि UI is the visual representation and UX is all the research and the process that we do before getting to designing something. So उस हिसाब से ना मैं इधर आ जाता हूँ वापस हमारे इस डिज़ाइन प्रोसेस वाली स्क्रीन में. Now since you guys have seen कि डिस्कवरी सेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर आपने को ये भी पता है कि यूजर रिसर्च क्या है, एंड देन दिस पार्ट इम्प्लीमेंटेशन और द यूआई डिजाइन पार्ट. तो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस ऑल इज बेसिकली यूएक्स, और जो ये वाला पार्ट है ना इज यूआई डिजाइन. दिस इज यूआई. परफेक्ट. Sana Bukhari is saying when we are designing a website, we use CSS to style the layout of our website. Is it integrated with XD or any other front-end tools? So basically सना फॉर XD, जहाँ XD के लिए दो चीज़ें होती हैं, लाइक इंटीग्रेटेड टूल नहीं है, बट थिंग इज कि XD आपको हर कंपोनेंट के एक्सटर्नल एक CSS फाइल बना के देता है. सेम चीज़ आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लिखनी होती है. इट्स नॉट लाइक कि आप खुद से रैंडमली देखेंगे इसका शेडो क्या है, कॉर्नर रेडियस का बटन है तो सब कितना कॉर्नर रेडियस दिया हुआ है, बटन की विड्थ और फॉन्ट साइज क्या है, तो वो आपको प्रॉपर्ली एक तरह से डिफाइन होकर मिल जाती है. जब हम फिग्मा पे, आई थिंक शेरी अगर हम फिग्मा पे एक मिनट इनको दिखा सकें कि CSS किस तरह जनरेट होती है, अगर इसी के हम दिखा दें, लाइक इसी का अगर हम स्विच करें, लाइक UX UI Bootcamp, ओके, जो हेडिंग है सना, अगर आप चेक करें राइट साइड पे आके पूरी CSS की लिखी आ रही है, इसकी पोजीशन क्या है, उसकी लेफ्ट राइट, उसकी पोजीशन. I'll give you guys a little understanding of what we're explaining here. So for suppose this is your website. For suppose, हालांकि this is not your website, this is our presentation. But for suppose this is your website और यहाँ पे आपका logo है. To understand आपका logo जो है वो डिज़ाइन में यहाँ है, लेकिन जब आप CSS में कोड करेंगे तो वो ऊपर से कितना टॉप पे बिल्कुल, हाँ, और लेफ्ट पे कितनी मार्जिन है, तो उसको देखने के लिए what developers do is they double click on this. Now in the inspect tab जो आपके राइट साइड पे आती है, वहाँ से they come to understand कि यार इसकी विड्थ कितनी है इस व्यू की, इसकी हाइट कितनी है, ये टॉप से कितना पिक्सल्स नीचे है, लेफ्ट से कितना पिक्सल साइड पर है, and then you also have the code written here from where you can easily understand कि what's what. ठीक है. तो सना, अगर आपका ऐसे सवाल फिर लाइक प्रॉपर्ली आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये आपको बेस्ट चीज़. और सेकंड चीज़ इज के अगर आप जैसे डेवलपर्स के लिए प्रॉपर एसेट्स जो अपने आइकन वगैरह करे हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट देम PNG SVG पे यूज़ करना चाह रहे हैं, या PDF, कोई भी JPEG, अगर JPEG भी चाह रहे हैं तो आप सिंपली उन आइकन्स की भी निकाल सकते हैं. फॉन्ट लाइब्रेरी क्या आपने यूज़ करी है. अगर शेरी आप UX UI जो बूटकैम्प की जो हेडिंग है उस पर डबल क्लिक करेंगे, या तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हमने फॉन्ट साइज क्या यूज़ करा है, उसका वेट कितना है,
स्टाइल क्या आता, साइज क्या रखा, लाइन हाइट क्या रखी, दैट्स द मेन थिंग है, कलर्स तक आपको बता रहा है, राइट। एंड CSS पार्ट में सिंपली आपको कॉपी करना है, तो आपको कस्टम खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वन ये थिंग, जब आप है। कलर्स के साथ कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर वेब डिजाइन में यू हैव हेक्स कलर्स, तो वो भी आप यहाँ से चेंज करते हैं कि यू जस्ट इजीली गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हम्म। हेक्स कोड इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, वो चीज़, और एक और चीज़, अगर आप वेब में यूजुअली कुछ लोग होते हैं, कुछ पिक्सेल्स पे खेल रहे होते हैं, कुछ REM और रैम के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो भी स्विच करवा सकते हो अपने साथ, अपने हिसाब से। अगर आप, हर डेवलपर का अपना अपना तरीका होता है करने का, तो आप उसके हिसाब से भी आपके लिए बहुत ईजी है। ये इन टूल्स से बहुत फर्क पड़ता है। Okay. Do you guys have any other questions, or should we move on to introducing Figma to you guys? And on a scale of 1 to 10, how excited are you guys to see how Figma works? फरजाना, इसके लिए मैं बोलूँगा आपको HTML तो लिखनी पड़ेगी, लाइक प्रॉपर अगर आप वेबसाइट कर रहे हो उसके लिए HTML तो ये करनी पड़ेगी, लेकिन टूल्स की जो टायरिंग होती है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, उसमें आपका टाइम बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो आपको बार बार डिजाइन से कॉल करके पूछना नहीं पड़ेगा कि आपने इतनी स्पेस में रखी थी, कितनी मार्जिन थी। इवन अगर आप कोई बटन बना रहे हो उसमें पैडिंग दे रहे हैं, राइट, जो टॉप लेफ्ट राइट की पैडिंग दे रहे हैं अगर हम लोग, अब वो भी इक्वली स्टेप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, क्या? और हाँ सना, you're Yes, right, sir. code gets generated simultaneously. Again, how excited are you guys on a scale of 1 to 10 to see us tell you guys how Figma works? अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम टूल्स पे थोड़ा बता सकें शेरी, अगर हम Tools, टूल्स पे अगर ओवरव्यू दे दें कि फिग्मा क्या है, XD और स्केच की क्या पावर है, व्हाट डू यू uh, थिंक? भले, as you wish. Is it something you guys अगर आप, recommend? इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो डू लेट अस नो एज अ क्वेश्चन। And just by the way, Larib has a question. She says, why industrialists don't use qualitative evaluation method? Example, psychophysiological, what? Wait a second. Psychophysiological Psychological measures, major. eye tracking, etc. for UX. It has been seen that they mostly use usability evaluation methods like different questionnaires, system usability scale, or performance metrics. Industrialists don't use qualitative evaluation method. हम्म। When you have, as long as I know, so when you have your performance metrics आपको निकालनी है, और आप कह रहे हो कि they don't use qualitative evaluation, so a lot of things when you when you have surveys, so not only surveys help you understand how many people or how many users who are facing certain problems, उसमें साथ साथ in surveys you can have qualitative things that you can ask of why they're facing this problem. From that survey you can also understand and have qualitative research data collected. Does that answer your question, Larib? Or should we move on to Figma's exploration? I think we should move on to Figma's exploration. What do you say, Hassan? Also, that's it. Come again? On करते हैं। Danish Wahid has a question. How can we transfer real-time data values from machines to an app to facilitate viewing of production errors, etc.? यार, आप जो पूछ रहे हैं, how can we transfer real-time data values from machines to app to facilitate viewing of to बिल्कुल see? दानिश, यस वी कैन, Okay. बिल्कुल हम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स, जैसे कि अगर देखें, अगर हम वैसे दानिश विद माय फ्रेंड राइट ना, हम सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े, जस्ट लेट यू नो। तो हाँ दानिश भाई, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि रियल टाइम डेटा हम चेक कर सकें। अगर हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन की APIs बनी होती जो बेसिकली 2-3 एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रही होती हैं। अगर आपकी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं कि अगर आप रियल टाइम डेटा मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इसको API के थ्रू किसी अपने मशीन से या उसके जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करवा सकें, तो यस हम करवा सकते हैं। इवन अगर आप Arduino के बारे में जैसे आपको पता होगा, तो हम जैसे रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो सेम चीज़ वो भी API के थ्रू कॉल हो रहा होता है। हम उसके थ्रू डेटा वगैरह रियल टाइम जितना भी डेटा हमें चाहिए हम प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं। Okay, Danish, just by the way, to answer your question concisely, I would say
कि इफ़ यू आर आस्किंग कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से जैसे यूजर्स उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एरर्स कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ आपको वो डेटा कहीं आपका एक डेटा डंप बने जहाँ आपको पता चल रहा है ये हो रहा है. सो फॉर दैट वी हैव टूल्स लाइक हॉटजार फॉर वेबसाइट्स हाँ एंड मिक्स पैनल जो होती है हमारे मोबाइल ऐप्स के लिए. तो वो जो टूल्स है ना, उनकी सर्टेन एपीआईज बनती हैं कोड में. बेसिकली दोस एपीआईज आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड इन योर ऐप यू हैव टू इंटीग्रेट दैट एपीआई. उस एपीआई के बाद मिक्स पैनल जो टूल है उसका एक डैशबोर्ड होता है. वहां पर सारे डेटा के जो जनरेटेड नंबर्स वगैरह हैं कि व्हाट एरर्स आर कमिंग, हाउ मेनी यूजर्स सी दिस एरर, हैव बीन फेसिंग दिस एरर, वहां आपको पता चल जाता है. लारिब अच्छा, आलम वन मोर थिंग says, शायद जस्ट गिव मी अ सेकंड. तो हॉटजार का आपने नाम लिया, तो यूजर फॉर यूजर टेस्टिंग हॉटजार बहुत फेमस यूज होता है. सिंस जैसे कि हमने बात कर दी यूजर टेस्टिंग में, हम लोग यूजर के पास जा रहे होते हैं हम टेस्ट करने के लिए कि whether this product is will work or not. तो द थिंग इज कि हॉटजार, लेट्स सपोज अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती है, उसकी वेबसाइट एप्लीकेशन कुछ मौजूद है, तो हॉटजार वहाँ पे किस तरह आपको हेल्प करेगा. हॉटजार का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि वो आपको हीट मैप जनरेट करके देता है. व्हाट आर हीट मैप? तो अगर शहरी अगर आप हॉटजार हीट मैप के सर्च करें गूगल में, तो for अगर sure. बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसका फायदा क्या होता है हमें. Where do you want me to go? जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. कोई भी अगर हॉट हीट मैप की तस्वीर पर स्क्रॉल करें. Sorry, come स्क्रॉल. again. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो बेसिकली देखिए, हीट आपको हॉटजार ही कन्वर्ट करके दिखा रहा होता है कि आपके जो यूजर वेबसाइट पे पहुंचा तो उसका क्या बिहेवियर था. आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे कि हम बात करें, जिससे हम लोग चाह रहे थे कि सर्च की बटन हम लोग अगर ई कॉमर्स में बाहर लगती, तो क्या यूजर ने उसको देखा, क्या वो काम कर पाया, क्या उसका गोल अकॉम्प्लिश हुआ. कहीं हमारी बीच में टेस्टिंग करते हुए जब कोड करने का वेबसाइट हमारी क्रैश तो नहीं हो रही, क्या हमारे बटन सही से काम कर रहे हैं. हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं, तो कहाँ पे यूजर ने ज़्यादा क्लिक करा है, और अगर 1000 पे से कितने परसेंट लोग यहाँ पर पहुँचे हैं. तो एक ही प्रॉपर आपको एक ओवरव्यू दे रहा होता है. अगर आप इंटरव्यूज टेस्टिंग नहीं कर पा सकते, जहाँ पे आप आई ट्रैकिंग कर रहे हो कि उसका बिहेवियर क्या है आपके यूजर का, हॉटजार आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करता है. क्योंकि अगर आपके पास एक वेबसाइट रिवैम्प होने को आई है, दोबारा से आप उसको दोबारा बनाना चाहते हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि अच्छा मेरे ऑडियंस कहाँ पे ब्रेक हो रही है, कहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. एक और चीज़ वो ये बताता है कि अगर यूजर ने पेज स्क्रॉल करा, तो वो एवरेज कहाँ तक पहुँचे. जो मैं इनको सपोज डेटा दिखाना चाह रहा था, जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, क्या वो देख पाए, क्या वो नहीं देख पाए, या वो पहले ही वहाँ अगर पेज से चले गए. अगर वो पहले चले गए तो इसका मतलब ही मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं है. जो मैं जो वो गोल जो वो चाह रहे थे अकॉम्प्लिश, जो टास्क अकॉम्प्लिश करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया. राइट, दैट्स द मेन थिंग. अगर जो बटन पे मैं चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर क्लिक करे, अगर वो क्लिक हो रहा है तो हाँ मेरा मेरा वर्क काम करे, जो मैं गोल अकॉम्प्लिश करना चाह रहा था वो प्रॉपरली काम करता. तो ये चीज़ें आपको हॉटजार यहाँ पे बहुत मदद करता है. हाँ, काइंड ऑफ एक स्पाइंग की तौर पर चीज़ होती है, इज नॉट गुड, बट या आपको इस तरीके से एक प्रॉपर आपको फीडबैक मिलती है. Okay, and Larib, yes, we should use qualitative and quantitative methods together. Basically, it depends on the type of research you are doing. If you want to know you already know कि यार ये एक मसला ऐप में है, ठीक है. You come to know this from this mixed panel और hotjar integration, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका जो यूज़र है उसको कितना 75% of your users are coming across this error. So now, to back this up by research to understand why this is happening, you would use qualitative research. क्या ये क्यों हो रहा है, ठीक है. So once you know that, you've done with that goal. You also want to now know quantity wise कि कितने लोगों के हो रहा है, which you already know because of Hotjar. So when you come to research, it depends on the goal. Since you know from your data how many people are facing this problem, so you already have that part where you know quantity. So now you go for qualitative research, जहाँ पे you try to understand why this is happening and how you can solve this problem. Any further questions before we move on to Figma?
I think we should move to Figma now. There are no more questions, and if there are, we'll certainly entertain them. So I'll start off completely शुरुआत से फॉर सपोज मैं अपने गूगल क्रोम पर हूँ एंड आई नो कि दिस इज फिग्मा ओके आई नो बिकॉज आई नो फिग्मा का आइकन कौन सा होता है हाँ so you double tap on Figma or you single tap on Figma. This opens up your Figma. अच्छा one thing is you guys can follow along because Figma को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. You can use it on your browser. So if you go to your browser and write Figma, now since I'm already logged in, so I already know and am in on the screen. But if I log out, Rana, is your Figma logged in browser Yep. पे? Browser page, just give me a second. Because I've never logged out before, so I know exactly how that be. Okay, I'm logging out. Logged in, man. Okay, Figma, you come to figma.com. If you guys are following along, come to figma.com. On Figma, for you guys, it'll be sign up. For me, it'll be login, of course. Once I log in, I can then come to see. Yeah, now give me a moment because I have to log in. Okay, it's as simple as that. For you guys, if you sign up, आप अपना वो कर लो. यस शाजिया, बिल्कुल पॉसिबल है. हम आपको अपनी ईमेल एड्रेस दे देंगे. अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप मेल भी कर सकती हैं, या जस्ट फेसबुक पे अगर आपने क्वेश्चन पूछने कोई इशू नहीं. या इसी थ्रेड में अगर आप बाद में पूछना, हम ईशा जो हमारे मॉडरेटर हैं उनकी थ्रू बाद में चेक करवा लेंगे. Okay, so if you sign up, you can sign up using your Google ID. Yeah, Isha, I'm sorry I keep breaking the flow, but yeah, Isha, we will love to drop our profiles over here. We will do that after the stream ends. So I've already dropped Coming my- back to Figma, as soon as you log in or sign up with your email ID, or if you want, you can have a password. You'll come to a screen जहाँ पे you'll have your recents, or you'll come to simply drafts verify. Now what you can do is it's as simple as just clicking on the plus sign to create a new file. You'd go with blank canvas, and voila, on your browser you have a strong tool for design. If you I'll give you guys a minute because I guess Fatma Ali is asking a question. No, Fatma, for Figma is free. You can use Figma as long as you're the only person using Figma. For suppose you have a team and you want more than one person to edit a file, वहाँ पे आपको pay करना होता है. But to start off, as you're a single user or maybe as a freelancer, you can still use Figma for free. There's no cash needed to do that. XD का भी I think ये है या ऐसा नहीं है. XD used to be free as long as I remember. The thing is that it used to be free, but the thing, even now it is free, but the thing is कि जब आप प्रोटोटाइप कर रहे होते हैं उसमें लिंक जब आप जनरेट करते हैं बात के लिए, जब शेयरिंग जो टेस्टिंग के, उसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. कुछ जगह पे उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं आपको, और कुछ जगह पे कंपोनेंट्स के लेवल पे आपको थोड़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है. Okay. Would it be okay for you, Rana, to cast your screen? Sure. So I'll stop casting. So any specific reason? Just Sorry. like what do you want me to do, man? Share your screen. Okay. Give me a... Hello. Yep. So I'm here. Okay. So the only difference is that अगर आपके पास ऐप होती है तो आप गूगल क्रोम से निकल जाते हैं और जो आपकी टैब बार होती है गूगल क्रोम वाली वो हट जाती है. You have the app now, and the app is also free to use. So I tried to tell you guys what these. Oh, नई फाइल बना दो प्लीज ड्राफ्ट्स पे. Just have a blank canvas maybe. चलो. ओके, जो ऊपर आपके पास बार है ना, उसमें यू हैव set of tools that you can use to create something.
ठीक है, just to give an overview what each tool does. We'll dive into that, or are we already diving into it? आई थिंक तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओवर भी दे देते हैं फिलहाल। हाँ, तो as you can see this over here, the first one, Rana, can you come to the first left side pe, the pointer, the arrow pointer, ओके, the move tool. Okay, here you have the move tool. ठीक है, with this you can move your shapes. और इसके बराबर में आपके पास एक frame tool आता है. What the frame tool does is that it gives you uh, a box in which you can design. For suppose you want to design on a MacBook, so what you can do is you click on it, then you on the right hand side, is it right or left? राइट, तो हाँ, राइट, ऑन योर राइट से ऑन योर राइट साइड यू हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस कि आपको क्या चीज़ किस किस्म का फ्रेम चाहिए और आप किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करो. सो इफ यू आर डिज़ाइनिंग फॉर आईफोन फॉर सपोज, हाँ, लेट्स जस्ट गो विद आईफोन एक्स। भले बना दो आईफोन ही तो The thing आईफोन. is, अच्छा, वन मोर थिंग इज कि आपको डिजाइन जो आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, इनके विड्थ और हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये आपको फिग्मा और एक्जिट दोनों बने पहले से बताते हैं कि इनका क्या रिक्वायर्ड साइज होता है। इट्स नॉट लाइक अगर मुझे पता है कि आईफोन एक्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट मुझे मेमोराइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल याद नहीं रखना। मुझे सिंपली अगर मुझे आईफोन एक्स की लेट्स सपोज एक डिज़ाइन बनाना है, इट्स नॉट लाइक कि मैं गूगल करूँगा अच्छा आईफोन एक्स का स्क्रीन साइज़ क्या है। सिंपली यहाँ पे आऊँगा फ्रेम पे, यहाँ पे मुझे एक मिल जाएगा आईफोन 8 चाहिए, आईफोन प्लस लेट्स सपोज आईफोन 8 चाहिए, सिंपली प्रेस करूँगा तो प्रॉपर उसी साइज में मुझे मिल जाएगा। तो ये अगर आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं क्या डेस्कटॉप का साइज़ क्या होना चाहिए, मोबाइल का क्या होना चाहिए, टैबलेट का, सब आपको प्रॉपर कुछ चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एंड्रॉइड के लिए क्या है वगैरह। जी सर। Isha, is there a way we can zoom in? Because I guess one of our audience is asking us to zoom in. We can zoom in on the canvas, but we can't zoom in on the toolbar or on the sidebars. ठीक है, I guess this is the best we can do. Zoom in करने के हिसाब से. Okay, so once we're done with the frame tool, we move forward to shapes. So shapes में you tap on it, so not tap, you click on it and you have multiple shapes. राना कोई सा भी shape बना दो इनके लिए. So it's as easy as that. उसके बाद you have, whoa, okay. उसके बाद you on the other on the right of the shape tool you have pen tool. If you guys have ever used Illustrator, Photoshop or Illustrator, you know what a pen tool does is that you can create shapes of your own choice. For suppose you don't want to create a square, you want to create something wacky like Rana is doing here, so you use a pen tool. So what Rana just did is that on the right side you have options to add colors. So how you would add color is कि आपके right side पे, if you could just can we zoom in? Sure. नहीं, I meant zoom in on the panel. Isha, is there a way? चलो, I hope you guys can see कि ये ऊपर वाले पार्ट को हम अगर रिमूव कर दें, for suppose in your head imagine this does not exist and just focus on this part where you have fill and stroke. ना एक सेकंड, fill and stroke दोनों हटा दो. नहीं मतलब like remove them completely. Okay, sure. ठीक है. So without anything tapped, only आपका जो क्लिक किया हुआ आपके शेप पे, आपके राइट साइड, हाँ अभी आपका शेप भी नहीं है, वापस शेप आपने सेलेक्ट किया. Since राना पहले shape deselect the shape. Okay, sure. ठीक है. Your shape is gone. You don't know where the shape is now. Okay. To know where your shape is, you have a panel on your left जो कि layers का panel है. इस side पे you can see all the things that you have made on a frame. A frame is what we just told you कि iPhone की screen हो या MacBook की screen हो. ठीक है. तो यहाँ पे now that we know rectangle is something that we already know कि ऊपर हमने बनाया हुआ है, और बाकी हमारा जो हमने पेन टूल के साथ एक पाथ बनाया था उस पर क्लिक करें.
क्योंकि that's the only thing जो दूसरी स्क्रीन पे है, so you know that is the other thing that you've made. अच्छा, वन मोर Once थिंग, you सॉरी शरीफ फॉर इंटरप्टिंग यू। थिंग से देखिए, यहाँ पे आपको इसका आइकन भी इंडिकेट कर रहा है कि व्हाट इज दिस, लाइक सेम आइकन बता रहा है कि फ्रेम है, दिस इज योर वेक्टर, और ये शेप सिंपल आपको यहाँ से भी इंडिकेशन मिल जाती है। मतलब यहाँ पे तो बहुत कुछ भी नहीं है कि जब आप बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ पर आएगा, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स आएंगे, तो आपको आइकन बताने में बहुत हेल्प करता है। Sana, you asked, can an interface be designed by using images like dragging on, dropping them? I don't get this question. If you could just retype this question, we'd love to answer. Okay, so once you have selected your shape, you can then go to your right side and see two options, fill, और इसके नीचे you have stroke. So fill जो है वो आपका color होता है inside of a shape. When you tap on it, when you tap on plus, you by default have a gray color. Okay, if you want to change that gray color, you tap on the color square, and then you have uh, an option to choose color from a spectrum of different colors. ठीक है. Once you're done with this, you can, अच्छा यहाँ पे what Rana just did was कि after giving it a color, he can play around with the transparency. अब transparency के लिए आप यहाँ नीचे जो है इसके साथ भी आप, if you do this, यहाँ से भी you can change the transparency, or if you come out of this, you can change the transparency from here. ठीक है. उसी के नीचे you have stroke. अब stroke होता है outline. So whatever shape you make, if you want it to have an outline, you tap on the stroke option, और जो thickness होगी ना उस stroke की, वो इस नीचे number से define होती है. ठीक है. Similar to fill, अगर आप यहाँ इसके square पे tap करेंगे, जो color का square है, वहाँ पे you can select the color for your stroke. ठीक है. कमिंग बैक टू द टूल बार जो ऊपर है, जहाँ पे पेन टूल के बाद अब हमारे पास आता है यहाँ पे टेक्स्ट टूल. विद टेक्स्ट टूल यू कैन टाइप टेक्स्ट. आफ्टर सेलेक्टिंग द टी, यू कैन जस्ट come on to your frame and type anywhere. ठीक है. Now as designers you would want to change the font, so as soon as you type something, by default आपको कोई भी font दे देता है, as long as I know it's Roboto for everyone, और on tapping Roboto you have tons of other icons you can choose from, not icons, fonts. ठीक है. और फिर basically these fonts are known as type forms, and if you want to change the weight or fonts of this, you can select bold or regular. Font sizes can be played around with the number which is close to bold or regular, the weight. Baki, the alignment of text can be played around with these upper panel. Let's say sirf the text. Let's just not go to this alignment right now. Okay. So to play around the alignment जो आपके टेक्स्ट की होगी in terms of आपका आर्ट बोर्ड और फ्रेम और कैनवस, whatever you call it, उसके साथ अगर आपको अलाइनमेंट करनी है तो आप ये ऊपर जो आपके पास दिए हुए ऑप्शंस, इनके साथ अलाइनमेंट कर सकते हो. मगर अगर आपको टेक्स्ट के अंदर की अलाइनमेंट देखनी है तो आप इनके साथ यू कैन चेंज द टेक्स्ट. एक मिनट, और you could have a text box. Rana, would you like to tell them what a text box is? Rana, हाँ हाँ शायद बोलो. can you tell them what a text box is? सो टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली जैसे एन एरिया जहाँ पे प्रॉपर्ली फिल करवाने, लाइक इफ यू वांट टू ऐड अ पैराग्राफ, आप वहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट फिल्स की स्पेस बता देते हैं कि हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है. लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ से शुरू हो और पूरा इस कंटेनर के अंदर रहे. दैट्स द मेन थिंग, राइट. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लेट्स सपोज ऐड करता रहता हूँ तो मेरा पूरा जो टेक्स्ट होगा वो इस कंटेनर के अंदर रहेगा.
दैट्स द मेन थिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ, इसी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही पूरा सब चीज़ें हो रही हैं। दैट्स द मेन थिंग। Oh, okay. Thank you, Rana. Sana Bukhari asks, जो उनका पहला क्वेश्चन था, she has provided some context. She's saying कि for suppose मुझे एक सर्च बार बनानी है, तो since सर्च बार के अंदर एक आइकन आता है, तो क्या मैं वो आइकन खुद बनाऊं या मैं कहीं से उसको पिक कर सकती हूँ? So for इसके लिए मैं so दो चीज़ें बोलूँगा सना। इसके लिए बहुत सी चीज़ें, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो प्लीज़ बनाएं। आई वुड रिकमेंड कि बहुत अभी रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट में, फ्लैट आइकन फॉन्ट, बहुत सारी लाइब्रेरीज अभी मौजूद हैं। ठीक है, देखें, जैसे आपका एज ए डिज़ाइनर आपका काम है कि हम प्रॉब्लम को आसान करें। तो अगर आप अपने लिए ही कुछ प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो अगर आप जितना आसान कर सकती हैं तो करें, तो इट्स बेटर। इसके तरीका ये है कि लेट्स सपोज जैसे वेबसाइट का फ्लैट आइकन, ठीक है, यहाँ से जैसे सपोज आपको सर्च का जैसे कि आइकन चाहिए, तो जस्ट टाइप इन सर्च। यहाँ से आपको मल्टीपल आइकन मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले सकती हैं। लेट्स सपोज मुझे अगर ये चाहिए, अभी आपसे पूछेगा आपको एसवीजी चाहिए, आपको पीएनजी चाहिए, आप उस हिसाब से अपना कर सकती हैं। अच्छा, just by the way, I would like to mention here that I have to leave, and hopefully we're done with the questions, and further queries and further designing and things on the Figma tool will be guided to you by Rana. So this is me signing off, and Rana, you're on your own. Thank you guys for tuning in. Thank you, Sherry. Thank you. And just before I leave, Pakistan Women in Computing has asked a question, Rana. You're taking the stage. I'm leaving. Thank you, everybody, for your time. I hope it was helpful. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Sherry. ओके, सना, जैसा आपका सवाल था कि आपको फॉन्ट किस तरह में, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, वो ये होगी कि मैं आपके साथ एक फॉन्ट की लाइब्रेरी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें फॉन्ट ऑसम। सो बेसिकली लेट्स सपोज मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा, लेट्स सपोज मुझे चाहिए सर्च का एक आइकन चाहिए, तो जस्ट टाइप इन सर्च। एक मिनट, मैं इसको पहले एक मिनट में मैं इसी से चेंज कर दूँ ताकि आप लोग की आसानी रहे। टाइप इन सर्च, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे सर्च चाहिए, तो मैं सिंपली टाइप इन करूँगा फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी जो है मेरे पास, फॉन्ट ऑसम प्रो। कितना इजी काम था, मेरे पास प्रॉपर फॉन्ट, मुझे वो आइकन कन्वर्ट हो गया। लाइक मुझे अब उससे थिंग इसके अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर एक ओवरव्यू भी मिल सकता है कि मुझे उसका वेट क्या रखना है आइकन का। इट्स गोइंग टू बी रेगुलर थिंग। अगर मैं बहुत जूम करूँ कि मुझे इसको रेगुलर करना है, इसका वेट बहुत मिनिमल किस्म का मुझे चाहिए, लाइक बहुत हैवी चाहिए, मैं यहाँ से बिल्कुल कर सकता हूँ। द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस फॉन्ट इज़ कि मैं सिंपल इसके, जिस तरह हम फॉन्ट के साथ हम इनके फॉन्ट साइज से यूजुअली गेम खेल रहे होते हैं कि मुझे फॉन्ट छोटा करना है, बड़ा करना है, सिंपली मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इसका करता हूँ फॉन्ट 48, तो मैं उसके हिसाब से प्रॉपरली कर दूँगा। मैं ये पेड लाइब्रेरी तो इजीली आपको अवेलेबल नहीं होती, बट मैं आप लोगों के साथ इसकी लिंक शेयर भी कर रहा हूँ जब रिसोर्सेज में, ताकि आप लोग आराम से इसके साथ खेल सकें। आप लोग की लाइक देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत लंबा काम है कि मुझे नाम किस तरह याद रखेंगे। मैं पूरी चीट शीट भी शेयर करूँगा इसके साथ कि मैं नाम किस तरह याद रखूँ कि यार ये चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एक काम कर रहे हो तो जहाँ पे मल्टीपल आइकन्स होते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक सर्च है, देखिए कुछ आइकन आते हैं हमारे पास। हैमबर्गर, लेट्स सपोज कि मेरे पास हैमबर्गर आइकन है, तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा। मेरे पास एक शेवरॉन होता है, जिस तरह ये आइकन है, मुझे वो किस तरह यूज़ करें। तो आप बार बार आप उसको फ्लैट आइकन में जाएँ, कॉपी पेस्ट करें, फिर लेकर, इट्स बेटर कि आप यहीं से कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको नुकसान होती है कि सेम उसकी कंसिस्टेंसी। बस थिंग इस कि फ्लैट आइकन में जैसे लेट्स सपोज अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आपको ये होगा कि एक सपोज एक सर्च आपको फील्ड मिल गई, ठीक है, सर्च बार आपको मिल गई। सेकंड में एक दूसरी अगर आप आइकन निकालें, पूरे शेवरॉन निकाल लें, जो कि मैंने ये आइकन निकाला था, इसका वेट बहुत बड़ा हो सकता है। व्हाट आई मीन बाय वेट, इसकी थिकनेस, जैसे इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, थिकनेस की इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, तो वो एट द एंड जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसके साथ सही नहीं रहेगी। तो इट्स बेटर कि जितने भी आप आइकन थ्रू आउट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, वो आपको एक साथ एक ओवरव्यू आपको और कंसिस्टेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं शेयर करता चलूँ
कि अच्छा एक टेक्स्ट के बारे में तो आपको शेरी ने पूरा बता दिया था हमने कि आप प्रॉपर टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं, कहीं टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आती है हैंड टूल। हैंड टूल क्या, लेट सपोज मेरा पेन में बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पे तो अभी मेरे पास एक सिंगल एक फ्रेम बना हुआ है, राइट, मेरे पास मल्टीपल फ्रेम, लेट सपोज जब हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं हमारे पास 500-400 फ्रेम्स तक पहुँच जाते हैं, तो उसको एक मुझे बार नेविगेट करना है, तो मैं इसको लाइक हैंड टूल आपके काम आपको मूव करने में यूजफुल होता है। अब तो इसका शॉर्टकट भी है, सिंपली अगर आप स्पेस बार अपने प्रेस करके रखेंगे तो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सिंपली प्रेस करें, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं अपने कैनवस को, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर इफ़ यू आर यूजिंग ऑन मैकबुक राइट नाउ, तो अगर आपको जूम इन और जूम आउट करना है तो जस्ट होल्ड ऑन कमांड की आप प्रॉपर जूम इन जूम आउट कर सकती हैं। और विंडोज़ के लिए प्रेस कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल की आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप टूल्स पे कर रहे होते हैं तो कंट्रोल, अगर विंडोज़ में कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, दे लाइक ए बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हर जगह काम आने वाले हैं। जितना अच्छा आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना, कंट्रोल जेड तो बहुत फेमस होता है, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपके लिए बहुत जगह पे काम आएंगे। अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन, एक यहाँ पे हम लोगों ने हैंड टूल कवर कर लिया, एक यहाँ पे टूल होता है कमेंट्स का। कमेंट्स करता क्या है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं जैसे हम कोलैबोरेटिव तो इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं कि हम बहुत सारे डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स एक ही फाइल पे होते हैं, जिससे हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग ये लिंक जो है डेवलपर के साथ शेयर करते हैं ताकि उनको इसकी CSS ईजिली मिल जाए। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक दो आर्टबोर्ड हैं, मैं आपको ये बताऊंगा मैं शॉर्टकट किस तरह लिया। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि दोनों आर्टबोर्ड रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेवलपर ये वाला बॉक्स यूज़ करे, ये वाला यूज़ ना करे। तो लाइक अगर मेरे पास ऑफिस में तो मैं इसको जाके बोल दूंगा, लेकिन अगर कोई रिमोटली काम कर रहे हैं तो मुझे इनको बताने के लिए या कुछ भी अपनी कोई भी यूज़ हो सकता है, डेवलपर को बताने के लिए, अपने याद रखने के लिए हम कमेंट्स ऐड कर रहे होते हैं। या तो कोई मुझे फीडबैक मिल रही है, मुझे अगर मेरे हेड की तरफ से फीडबैक मिली है कि यार इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से उनके साथ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कमेंट के क्वेश्चन पे गया, एक मरतबा क्लिक करेंगे ताकि बस तरह पॉपअप आ जाए कि मैं बोल दूंगा यूज दिस बॉक्स, ठीक है, सिंपल मैंने कमेंट करा और पोस्ट कर दूंगा, तो ठीक है, मुझे मालूम होगा जब भी मैं दोबारा इस वेबसाइट इस फिग्मा फाइल पे आऊँगा तो मुझे मालूम हो जाएगा, ठीक है, एक हसान राना की तरफ से कमेंट आया कि यूज़ दिस बॉक्स, तो मैं इसको इजीली कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब एकदम से हट गया, यहाँ पे आप स्विच भी कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, हर टूल्स के साथ अगर आप देख रहे हैं मैं फ्रीक्वेंटली सब पे ना स्विच कर रहा हूँ, तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप हर किसी से होवर करते हैं तो हर एक आपको ना एक शॉर्टकट की भी बता रहा है आपको कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। पेन है ये, फॉर पेन फॉर इट्स P, फॉर सेलेक्ट टूल इट्स V, फ्रेम के लिए लाइक F से ही मालूम हो रहा है मुझे, रेक्टेंगल है तो R से शुरू हो रहा होगा, एरो है, लाइन है तो L से शुरू हो रहा है, मुझे बता रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये तो एक जनरल सा एक ओवरव्यू हमने दे दिया। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स सपोज हम इसको एक करते ही हैं, हम एक इसको भी डिलीट करेंगे, एक काम टास्क वाइज असाइन करते हैं। मेरा टास्क ये है कि मैं एक आर्टबोर्ड लूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा स्क्वायर यहाँ पे आके इस तरह से एक्सपेंड हो जाए, ये पूरा मेरा इस तरह से एक्सपेंड हो जाए, ठीक है, बॉटम पे आके फिक्स हो जाए। मेरा अभी टास्क ये है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करूँ तो वो नीचे आ जाए, और जब नीचे क्लिक करूँ तो वो दोबारा से ऊपर चला जाए। तो मतलब इसमें प्रोटोटाइपिंग भी हम लोग कर रहे होंगे और ये चीज़ भी कर रहे होंगे। तो आज सिर्फ 10 मिनट्स में मैं इसको थोड़ा जल्दी लेके चलूँगा, कल तो हम प्रॉपरली इसका ओवरव्यू कर देंगे अच्छी तरीके से। लाइक दोबारा कंट्रोल Z करके ऊपर है। अच्छा, अब कॉपी करना है। इफ यू आर ऑन मैक राइट नाउ, तो अगर आप किसी भी फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली इसके लेयर्स में जाकर सेलेक्ट कर दें, या अगर आपको लिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसकी लेयर्स कहाँ पर होंगी, जब बहुत लेयर जाएंगी, सिंपली इसका जो नाम लिखा रहा है लेयर का, इसमें एक मरतबा क्लिक करें, उसको सेलेक्ट कर देगा। इफ़ यू वांट टू डुप्लीकेट योर फ्रेम, और जिससे अगर बॉक्स भी अगर डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, दिस होल्ड ऑन ऑल्ट की फॉर विंडोज़ और ऑप्शन की फॉर मैक। इस तरीके अगर आप देखेंगे आपकी कर्सर के राइट साइड पे एक और एक कर्सर आ जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि अब जो भी करेंगे वो डुप्लीकेट उसका बनेगा। सिंपली प्रेस, इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये मेरा काम हो गया। अच्छा, अब मेरा टास्क ये है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा टूल यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी हम करेंगे,
मैं चाहूँगा कि जब यहाँ पर आए तो इसके अंदर एक शेडो भी आ जाए। ठीक है, शेडो कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मेरा टास्क ये था कि मैं यहाँ पर इसको नीचे लेकर आया, बॉटम पे लेकर आऊँगा इजीली, और मैंने इसको अपने हिसाब से अलाइन कर दिया। ठीक है, लाइक कलर भी सेम रहने देते, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब मेरा टास्क ये था कि मैं जब इस पर क्लिक करके यहाँ पर, तो ये या इसकी साइज चेंज हो जाए, हो गया, बट मैं चाहता हूँ इसमें एक शेडो भी आए। शेडो के लिए मुझे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, जिस तरह हम कल फिल और स्ट्रोक की गेम कर रहे थे, सेम उसी इफेक्ट से हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह का मेरे पास देखें एक ड्रॉप डाउन इस शेडो खुल गया। बहुत सारे शेडोज के आप इफेक्ट के हो सकते हैं, जैसे कि वी हैव इनर शेडोज, ड्रॉप शेडो, लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर। अभी यूजुअली हम ड्रॉप शेडो पे रहेंगे। उसकी जगह सेटिंग चेंज करनी है, हम कलर की हम जब सेटिंग चेंज करते हैं, सिंपली हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, राइट। एक पॉप मेन्यू खोलते हैं, उस पर कलर चेंज कर सकते हैं। तो सेम फॉर लाइक शेडो, हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें पूछेगा आपको इन एक्स एक्सिस में क्या रखना है। हम थोड़ा ऊपर करके रखें इसको, अगर देखने के लिए अपने लिए कि थोड़ा इसको एक्स एक्सिस में मुझे कितना उसको रखना है। एक्स एक्सिस मुझे मेरे पॉइंट्स बता रहा है, अगर हम मैच हम करते हैं तो एक्स एक्सिस जो हमारा होता है और वाई एक्सिस होता है, इसको माइनस एक्स में भी लेके जा सकते हैं, -5 में कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में 0 रहे, बट वाई एक्सिस में ये 10 का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए एकदम से मेरा शेडो नीचे आ गया। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसके लिए, लाइक ये मैं सिंपली मैं चाह रहा हूँ, सपोज मेरा टास्क ये है। ठीक है, और ब्लर मैंने इसका कर दिया लेट्स से 20। अच्छा, अब मेरा टास्क ये है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, हम लोग देखिए डिज़ाइन तो बना लिया। जब हम बात कर रहे थे प्रोटोटाइपिंग की, जो वो चीज़ हम किस तरह समझेंगे। प्रोटोटाइपिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे जिस तरह डिज़ाइन है, प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट है। इंस्पेक्ट से आपको उसकी CSS मिल रही थी, डिज़ाइन से आपको उसके शेप और एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट बना सकते हैं। अब प्रोटोटाइप आपका काम करता है। मैं प्रोटोटाइप टूल पे गया। अच्छा, जिससे प्रोटोटाइप पे आएंगे तब हम नोट करेंगे यहाँ पे एक सिंपल कॉर्नर पे जो इसके हैंडल्स हैं, यहाँ पे एकदम से प्लस का आइकन आ जाता है। तो मैं इसको एज अ प्रोटोटाइप बटन के तौर पे या कुछ भी तौर पे क्लिक कर सकता हूँ। सिंपल इसको ड्रैग करूँगा। अब मुझे पूछेगा आपको कहाँ पे आपको इसको ड्रॉप करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस बटन, जब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ले आए, राइट। यहाँ पे मैं रिलीज़ करा। अब इस तरह मेरे पास मेन्यू खुलता है। अब मुझसे पूछेगा कि आप किस तरीके से करवाना चाहते हैं। ऑन टैप पर हो, जब मैं टैप करूँ इस बटन पे तो मेरे पास इस तरीके से आ जाए, या फिर मैं सिंपली करूँ। सिंपली हम इसको टैप पे करते हैं। वन मोर थिंग कि हाँ ठीक है, टैप पे रखेंगे और स्मार्ट एनिमेट करेंगे। लेट्स सपोज इसको प्ले करने के लिए यहाँ पे प्ले का बटन है, प्ले कर रहा, लोड होने दें इसको। ठीक है, अब मेरे पास इस तरह का पूरा मेन्यू खुल गया, मॉकअप भी खुला हुआ आईफोन का। जब मैंने एक पर क्लिक करा, ठीक है, आपने चेक करा अगर इस तरीके से प्रॉपरली मेरे पास है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये प्रॉपरली जाके एनिमेट हो रहा है। तो ये फिग्मा का बहुत अच्छा फायदा है। rather than कि मैं डेवलप करवाऊँ, उसमें मैं अपने डेवलपर का टाइम ज़ाया कर रहा हूँ कि इस तरह की एनिमेशन होनी चाहिए, ये इस तरह यहाँ क्लिक करूँ तो ये एकदम से बॉक्स फिल हो जाए, तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करवा सकता हूँ। अच्छा, कुछ सवाल हैं हमारे पास। अच्छा लाइक सना बुखार का हो गए तो हमारे पास ये, कैन यू प्लीज also talk about the important UI UX skills are if you're looking forward to building a demo for your startup app, and how important UI UX skills are when you're a hackathon hunter and love to brainstorm tech ideas, build dream. I think UI UX skills सबके पास होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ UI किसके से, ये मतलब है कि एक्सपीरियंस तो सबके साथ स्किल्स होने चाहिए। बिकॉज थिंग इज कि हम लोग इन टूल्स के साथ रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग एप्लीकेशन हम लोग यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है या कोई डेमो बनाना है, अगर कोई स्टार्टअप कोई भी एक MVP बनाना है, तो फिलहाल सबसे पहले उन जो एप्लीकेशन को आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने लगे, फिर यूजिंग करीम, तो ऑब्जर्व करें कि वो करीम किस तरीके से आपका टास्क फुलफिल कर रही है। मुझे राइट, अगर लाइक मुझे करीम की गो मंगवानी है लेट्स सपोज, तो वो किस तरीके से मैंने क्या टूल्स परफॉर्म करे, मैंने क्या बटन पे क्लिक करा, क्या मेरा उसका ऑपरेशन था, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। प्लस एज अ डिज़ाइनर आप तो एक है प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। तो हैकाथॉन में भी ये होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आपके पास प्रॉब्लम है, उसको किसी ब्रेनस्टॉर्म करना है और सॉल्व करना है। तो डिज़ाइनर के लिए बहुत तो बहुत फ़ायदेमंद है।
अगर आप इन टूल्स पे अगर आप काम करते रहेंगे, अगर आप फिग्मा सीख लेंगे, तो आप इस बेटर कि आप बहुत जल्दी अपने जो आपके जो आइडियाज़ हैं उसको एक मीनिंगफुल मैनर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रात दिन कि मैं पेंसिल पे इसको लिखूँ कि सर मैं इस तरह करूँगा, वो हो जाएगा रात। ठीक है, आप इससे आपका ये बहुत फ़ायदा होता है। हैकाथॉन में भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि आप आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं कि टूल किस तरह काम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। और बिल्कुल, क्या लेफ्ट एंड लेफ्ट टू ब्रेनस्टॉर्म टेक आइडियाज प्रेजेंट एंड प्रोजेक्शन रहेगा। बिल्कुल देखिए, आप आइडियाज ही ब्रेनस्टॉर्म, जिससे हमने पहले बात कर रहे थे, हम ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहे होते हैं जब मूड बोर्ड्स जब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। जैसे शेरी ने भी आपको दिखाया था यूजर टेस्टिंग में कि उसने 3 सैंपल्स कर रहे थे। अच्छा, अब 3 सैंपल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, हम आइडिया जब चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ काम करी नहीं करी, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ काम करें फ़ौरन, ठीक है, फिर हम लोग ये चीज़ काम करेंगे, तो 2 से 3 हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। हमको यूजुअली फ़ौरन फिर जल्दी जल्दी लेके चल रहे होते हैं, rather than कि हम डेवलप करवाएं, डेवलपर का टाइम लग रहा हो, उस समय पता है बहुत बग्स आने हैं, तो हम जल्दी से ये स्टिक करके डिज़ाइन करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। आई थिंक मेरे बस सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा, व्हाट विल बी बिल्ड टुमारो। बहुत अच्छी चीज़ हमने सोची है अभी हम लोगों ने, शेरी और मैंने, हम लोग एक प्रोजेक्ट ही बनवा रहे होंगे, जिसमें से हम लोग प्रोजेक्ट की मैं डिटेल्स से भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लाइक प्रॉपर्ली हमें थोड़ी स्मॉल बिजनेस करने की ज़रूरत है। थिंग इसके हम प्रॉपर्ली एक एप्लीकेशन के डिज़ाइन करवा रहे होंगे। लेट्स सपोज अगर हम करीम बाइक को लेके जा रहे हैं तो हम यूजुअली उसी तरफ ही होंगे कि प्रॉपर एक मूड बोर्ड हम सेट कर रहे होंगे, किस तरीके से हम लोग मूड बोर्ड से हम लोग डिज़ाइनर्स काम कर रहे होते हैं। फिर उसका वायर फ्रेम लेके चलेंगे, उसका फिर हाई फिडेलिटी डिज़ाइन, उसको एट द एंड प्रोटोटाइप भी करेंगे। तो कल का सेशन जो थोड़ा होगा वो थोड़ा जल्दी जल्दी में भी यूजुअली करेंगे, सिंस हमारे पास टाइम थोड़ा कम होगा 2 घंटे का, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे कल हम लोग। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो बता दें, आई एम हियर, या फिर रैप अप करें। आई थिंक रैप अप करते हैं फिर। अगर सच कोई सवाल नहीं है, मैंने अपना लिंक्डइन की हैंडल भी यहाँ पे लीव करा हुआ है, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फील फ्री टू आस्क, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।